our Vedas and scriptures and Puranas and history sings the glories of Harinam or the chanting of the holy names. In the Ikshvaku lineage, there were very, very beautiful kings, and in the lineage of the sun god, in that lineage, there was a king whose name was Yayati. He was extremely pious and almost perfect, and he was taking care of the earth very perfectly. So one day, Yayati king met Devraj Indra. So Indra welcomed Yayati Maharaj with Narad Muni in his palace, and the Indra asked, "From where are you coming?" So Narad Muni says that I have just met Yayati Maharaj, and when they were discussing about him in the celestial planet Swarga, then Narad Muni started singing the praises of Yayati. He said that although you are the king of this celestial kingdom Swarga, but Yayati Maharaj is more famous than you. He is extremely powerful, and he is the epitome of self righteousness, and he is taking care of the earth very, very efficiently. He has already performed 100 Ashwamedh Yajna sacrifice and 100 Vajpayee's Yajna, that is the fire sacrifices. So, after hearing that, Indra became bewildered. He said that you have given a great news. We are extremely happy. He bid adieu to Narad Muni, and he started thinking that he has king has already completed 100 Ashwamedh Yajna and Vajpayee Yajna. So now my kingdom is in danger. So Indra was thinking that by his Yayati, like his father, will take my kingdom as his father did for 100 years, and I will lose my kingdom. So Indra started planning, what should I do so that Yayati cannot snatch away his kingdom from him. Indra made a beautiful plan. He thought that if Yayati Maharaj comes to rule the kingdom, my kingdom, and ask me to leave, it's better than that I ask him that you rule the kingdom. Then he was thinking that who should I send as the messenger? So Indra has a charioteer who is very wise and master in social behavior, and his name is Matri. Matali, sorry. And he sent him as a messenger. Matli went with the message to King Yayati,
And first of all, he requested that I have come from Swarga, the celestial planet, and the planet Earth on which you are staying, it is filled with so much distress, sadness. The earth has to suffer so much. A person has to stay in the womb for 9 months of a mother and have to suffer so much pain. And after taking birth, there are so many types of diseases and obstacles throughout their life. A person is entangled in sadness, distress, and discomfort. It's better. Indra has sent me. You come with me to Swargloka or the celestial higher planets. Yayati Maharaj understood the plan of Indra. So he thought that Indra is scared that I will rule his kingdom. That is why he's offering me to move to Swargaloka or the higher upper planetary system. So he said to the messenger that I am not interested in going to the upper planetary system or Swargaloka. He said that I don't have any desire to go to the Swargaloka. I want to make this earth Swargaloka because staying in the Swargaloka is also temporary. I want to make this earth better than Swarg or upper planets. I want to make it Vaikuntha where there is no misery or anxiety. So the Devdut, the messenger, Matli, came back to Indra, and after a few days, Yayati Maharaj gathered all his chiefs and told them that now is the ripe time to make this earth better than Swargaloka or the celestial planet. Yayati Maharaj said that I am writing a letter, make copies of that and distribute these flyers to all the inhabitants of the earth and make them work on this message. If they start doing this, then this earth will become Vaikuntha where there is no anxiety. So all the chief messengers of Yayati Maharaj started going to all the 10 directions and started giving the message of their king Yayati. And almost the whole earth heard it and they started practicing it. And history is proof that everybody became a devotee and everybody went to the eternal abode of the Lord. That too. So they gone to live while living on the earth and after that also eternally abode of the Lord. So you might be inquisitive to know what was the message that Yayati Maharaj had sent. So I got that letter yesterday, and even today, if we try to apply this tax, apply these rules in our lives, then if the government makes it compulsory, then
the earth will manifest Vaikuntha तो here. आप लोग उस लेटर को हम सुनना चाहते हैं, हम देखना पढ़ना So, do you चाहते want हैं to hear about that letter? दिखाने दूं? ये लेटर बहुत पुराना है, The letter इसलिए is quite जैसे old, तैसे हमें हासिल तो हुआ, लेकिन मैं so उसके शब्द थोड़े I से got it मैं somehow. बोलूँगा, मुझे तो थोड़ा सा I याद है, will speak लेकिन आप because I have प्रयास learned. कीजिएगा। So, स्क्रीन you पे just मैं try. आपके सामने इस लेटर को प्रस्तुत कर रहा हूँ। I'm putting that in front of your screen. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। श्रीकेशवम् श्रीकेशवं क्लेशहरं वरेण्यम् आनन्दरूपं परमार्थमेव नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमेत्र यपिबन्तु लोकः। अब मैंने पहले ही कहा I लेटर बहुत already पुराना है, mentioned this letter लेकिन is हमें quite समझ आ old, सकता है। but still we can ययाति understand. महाराज ने यह Yayati पत्र Maharaj has written this letter शास्त्रों के कुछ श्लोकों को लिखकर पूरी by धरती पर भेजा, getting the और लोगों references ने उसका from the पालन करके scriptures, धरती पर and वैकुंठ को उतार दिया। the people started acting on it, क्या लिखा and था? they श्री manifested केशवम Vaikuntha on this earth. क्लेश So, हरम what has he वरेण्यम। written? इस दुनिया में I'm क्लेश sorry. हरने वाला एक ही व्यक्ति है, In भगवान this केशव, world, भगवान श्री there is कृष्ण। only one श्री person केशवम क्लेश हरम, who can और वो केशव कैसे absolve है? all वरेण्यम। our वास्तव में वो केशव distress, कृष्ण ही वर्ण करने लायक and है, his name is स्वीकार Keshav, करने लायक है। and he is the only one आनंद who रूपम, is और वो केशव व कृष्ण ही आनंद का स्वरूप acceptable, है, and और he परमार्थ is एव। the वो epitome केशव ही of व कृष्ण ही इस संसार happiness, का परम तत्व है, परम and अर्थ he है। is the और इसलिए Param उस Tattva, भगवान श्री and कृष्ण that का is नाम why his संसार की name प्रत्येक जनता को लेना चाहिए। should be श्री chanted by केशवम everयone क्लेशहरम वरेण्यम in this world. आनंद रूपम परमार्थमेव, देयरफॉर नामामृतम Therefore, क्लेशहरम तु राज्ञा आनीतमत्रेव पिबन्तु लोका। हे लोगो, O people, हरि नाम के अलावा उद्धार नहीं है। there is no हरि other नाम ही way, आनंद देगा, हरि नाम ही only क्लेश हरेगा, chanting of the holy हरि names नाम will ही give you अमृत प्रदान करेगा। happiness, bliss, इसलिए हे
nectar and will remove all our obstacles. पिबंतु हरि नाम पिबंतु नामामृतम एवह So drink the nectar महाअमृत of पान the करो। chanting of the holy फिर आगे names. क्या लिखा था? Further, he adds, श्री पद्मनाभम कमलेक्षणम च आधार रूपम जगताम महेशम नामामृतम दोष हरम तुराज्ञा आनीतमत्रेव पिबंतु लोकहा। श्री पद्मनाभ जिसकी नाभि कमल के समान so सुंदर है, एक, whose और जिनकी belly नाभि is से like कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा a प्रकट हुए, lotus, and from there और Brahma कमल ईक्षण manifested, जिनकी ईक्षण जिनकी आंखें and कमल whose के समान eyes सुंदर है, are as beautiful और as the च lotus च और साथ ही साथ petals, जिनकी आंख and आधार रूपम whose जगताम eyes महेशम, जिनकी आंख पूरे जगत का आधार है। are the आज basis की of all this गोपिया world. कहेगी, भगवान अपनी आंखों से अपनी नेत्रों से जगत चलाते हैं। So the हमें Lord, तो हाथ पांव चलाने पड़ते ना, we work so hard with our hands and भगवान legs अपनी आंखों से to work, इस but the Lord जगत को makes चलाते हैं। this world work just by और his जो भगवान glance कमल के समान सुंदर or his जिनसे ब्रह्मा eyes. प्रकट होते, जिनकी आंखों से जगत चलता है, उस भगवान श्री And that कृष्ण के Lord, नाम अमृतम, नाम रूपी अमृत का पिबंतु Lord Sri लोका, Krishna, पीते रहिए, अर्थात we उस should भगवान all श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। तू राज्ञा, ये राजा की drink the आज्ञा है, nectar of इसमें कोई विकल्प the नहीं है, names of ये the राजा Lord. की आज्ञा है, And इसका this तो is पालन the करना ही पड़ेगा। order of the king, and you ययाति all महाराज जी have to follow. So श्रील Yayati प्रभुपाद Maharaj क्या sent कहते हैं? this letter, and he पापापहम says further, व्याधि विनाशल्प मानंददम दान दैन्यत नाशनम नामामृतम दोष हरम तुराज्ञा आनितमत्रेव पिबंतु लोकाः। भगवान कृष्ण Lord Sri पापों का Krishna, नाश करके पाप अहम, he पापापहम, भगवान श्री कृष्ण absolves कौन से all कौन our से सारे sins. पापों का नाश करते हैं? He वो has that व्याधि विनाशल्प, capability, और सारी व्याधि को अल्प कर देते हैं, and he और makes all साथ the ही obstacles and distress smaller. आनंददम दानव दैत्य Not नाशनम, only that, दैत्यों का नाश करके, he दानवों का kills नाश the करके जो demons परम आनंद प्रदान करते हैं, and gives उस भगवान श्री कृष्ण का ecstasy. नामामृतम दोष So, हरम तुराज्ञा, उस भगवान श्री कृष्ण का such नाम Lord ही Sri Krishna, सभी प्रकार के दोषों his को हरता name, है। तो which इसलिए absolves आज्ञा, all types राजा की of आज्ञा है कि इस नाम अमृत को shortcomings. पीते रहो। So, the king's order is to drink the nectar of the फिर holy आगे names, कहते that हैं, is, to नीचे chant the holy names. विश्वादिवासम विमलम धीरानम रामाभिधानम रमणम मुरारिम नामामृतम दोष हरम तुराज्ञा आनीतमत्रेव पिबंतु लोका। विश्व अधिवासम, ये पूरा विश्व This उस whole भगवान श्री world कृष्ण के हृदय में निवास करता है। is भगवान श्री कृष्ण कैसे a हैं? part विश्व of Lord Sri अधिवास। Krishna's heart. तो विश्वाधिवासम So, विमलम Vishwa धीरानम, Adhivasa means the whole world और resides in Krishna's और वो heart, भगवान परम निर्मल है and that Lord और is विरामम, और जिस भगवान से extremely परम विराम, pure परम and आराम प्राप्त soft, होता है, जो परम आराम प्रदान and करता who है। provides रामाभिधानम, the उस भगवान का एक अवतार राम भी है। best रमणम rest. मुरारिम, His name, जैसे one of the राम names is जैसे रमण Ram ऐसे मुरारी, and ये जो Murari. नाम है नामामृतम So, दोष हरम, such ऐसे भगवान का नाम दोष names of हरम, the Lord, सारे प्रकार के दोषों को हरता है। they absolve इसलिए all राजा की our आज्ञा है, पिबंतु लोका, failures and इस नाम shortcomings. अमृत को So, the पीते king रहो। has ordered that you all should chant the holy names of the Lord. यज्ञाद रूपम च रथांग पाणी
पुण्याकरम सौम्य अनंत रूपम नामामृतम दोषहरम तुराज्ञा आनीतमत्रेव पिबंतु लोका। जिस भगवान के अनंत स्वरूप है, the Lord who has innumerous forms, जिनके अनंत स्वरूप है, like the yajna sacrifice, जिन्होंने रथ and के अंग whose को अपनी बाहें अपने हाथों में धारण किया है। one पथांग form पाणी is यानी रथ का Pathangapani, अंग, means रथ का चक्का, who has जिसने अपने हाथों में उठाया पितामह took भीष्म की the याद हो रही है। wheel of तो the यज्ञ chariot in his भगवान के hands अनेकों in रूप the हैं, pastime of जो Bhishma रथांग Pitama, पाणी है। पुण्याकरम, जो जो सभी प्रकार के पुण्य प्रदान करते हैं, who is capable of सौम्य providing all अनंत रूपम, piety, जो स्वयं सुख और आनंद का स्वरूप है। and who ऐसे himself भगवान is श्री कृष्ण का the नाम form of नामामृतम ecstasy दोषहरम तुराज्ञा। and ऐसा नाम bliss, अमृत सभी प्रकार के दोष को हर लेता है। तू and इसलिए राज्ञा, राजा की आज्ञा that is है why कि पिबंतु लोका, Ragya, इस this नाम अमृत king's को order, पीते रहो। that you all should drink the तो इस nectar प्रकार of से राजा ने the भेजा। holy names of the Lord. और 3 श्लोक बाकी हैं। Or आगे कहते more हैं 3 verses are there. आदित्य He रूपम says, तमसा विनाशम चंद्र प्रकाशम भलपंकजानाम। कहते हैं he says कि that भगवान केशव Lord आदित्य स्वरूप, Keshav is सूर्य के समान like the sun, समस्त प्रकार के अंधकार को दूर करते हैं। and he can remove all भगवान types चंद्र of प्रकाशम, darkness, और भगवान चंद्र and के समान at the same सभी time he is प्रकार like के moon, अ, अ, मल को, सभी प्रकार की गंदगी को दूर करते हैं। as he can remove all kind of तो सूर्य के impurities. समान भगवान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, So like और sun, he चंद्रमा रूपी removes भगवान the darkness of सभी प्रकार ignorance, के मल को दूर and करते with हैं। moon, like ऐसे moon, भगवान का नाम he अमृत cleanses के the समान impurities. है, जो सभी दोषों Thus को his हरता है। names are like इसलिए nectar. पिबंतु लोका, हे So लोगों, इस नाम को पीना है। ऐसी राजा ने chant the holy आज्ञा दी। names by the आगे king's आगे order. कहते हैं Then he सखग says, पाणिम मधुसूदनाख्यम तम श्रीनिवासम सगुणम सुरेशम नामामृतम दोषहरम तुराज्ञा आनीतमत्रेव पिबंतु लोका। सखग पाणी, जिनके हाथों में, whose hand, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु we know that Lord की Vishnu, गदा का नाम क्या है? what is the name of his भगवान की club? जो गदा है उसका नाम है कौमुदिकी। कौमुदिकी Its गदा। name is Komodiki, भगवान के हाथ में जो शंख है, उस शंख का and नाम क्या the है? conch in his hand पंचजन्य। is named तो Panchjanya. कौमुदिकी गदा है, पांचजन्य Komodiki is शंख the है। club, Panchjanya is the और भगवान के हाथ conch, में कभी तलवार होती है। and sometimes तो he उस has a तलवार का sword. नाम क्या है? तो And यहाँ what पे is the कहते name of हैं the sword? सखग पाणी। It's भगवान Sakhag के हाथ में जो Pani. तलवार होती है, उस तलवार का नाम है नंदन। नंदन And नाम की खग it's तलवार जो अपने हाथ में the रखे हैं। sword's name is Nandan, मधुसूदनाख्यम, जो मधुसूदन नाम से प्रसिद्ध है। who is famous as the name श्रीनिवासम, as जो लक्ष्मी जी के Madhusudan, निवास स्थान है। and who सगुण is the सुरेशम, abode of और goddess of सभी fortune देवताओं Lakshmi के ji, ईश्वर है। and who सूर्य is the के lord of समान all the सुरेशम, ईश्वर। demigods. ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम अमृत, Such Lord अमृत के Krishna समान है। दोष हरम, name is सभी प्रकार के nectarian, दोषों को हरने वाला है। and इसलिए it can remove आज्ञा, all राजा our की आज्ञा shortcomings. है So the कि king's अत्र एव order अभ्यसिए is to पिबंतु लोका, इस नाम chant the अमृत को holy पीने names लगिए। of the Lord. तो इस प्रकार से इस चंद श्लोक में ययाति महाराज ने भेजा। So और फिर व्यास in मुनि ने this पद्म way, पुराण में it ये जो Yayati 4 Maharaj श्लोक sent हम this अभी बोले, letter, and ये all श्लोक these जो उच्चारण verses करता है उसको क्या फल मिलता है? were कहते हैं put नाम in Padma अमृतम Puran by Vyasji. And what is the result or benefit of सुपुण्य singing these? मधिस्य यो माधव विष्णु भक्त कह। यदि कोई व्यक्ति
if someone recites these, the glories of the names of the Lord written by Yayati Maharaj, यदि कोई इस श्लोक का पाठ करता है कब प्रभात काले, especially in the शुद्ध morning. प्रभात काल में नियतम Prabhat Kali मत्वा, means morning. यदि कोई इसका पाठ करता है तो स याति मुक्तिम नहीं कारणम च, वो सदा सदा के लिए Then he मुक्ति will को प्राप्त हो जाता है, eternally अर्थात attain the abode अपना of the वो Lord स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, and get the eternal परंतु form of the कारणम Lord, न च, अर्थात वो पुनः इस प्रकृति के अधीन कभी नहीं and होता, he इस never is जन्म bounded मृत्यु के चक्र में by नहीं the रहता। material तो इस nature प्रकार of का this पत्र material world. लेटर श्लोक जिसमें भरपूर हरि नाम की महिमा लिखी हुई थी, So this यह letter had पूरे all संसार the में पढ़ा glories गया, of the holy और names. उस समय की जनता, जैसे यहाँ सब हरि नाम ले रहे हैं ना, So उसी as प्रकार से हरि people, नाम लेने लगे, everybody is और taking the हरि नाम के holy द्वारा names of the Lord उसको here. जीवन Similarly, स्वर्ग और वैकुंठ बना दिया। the जिसके citizens बारे में of पूर्व जन्मों में Yayati's इतना kingdom दर्द था कि मेरा स्वर्ग कहीं चला न जाए, लेकिन धरती managed to के लोगों make को देखकर earth स्वर्ग के इंद्र को भी better than थोड़ा सा वो celestial हो गया, planet यार Swargaloka. And मैं धरती Indra पर पृथ्वी पर became जन्म लिया होता तो अच्छा था, greedy, लेकिन and इतना सुंदर that स्वर्ग had मुझे I मिल been गया तो मैं able खड़ा हो to गया। have take birth तो on जहाँ this हरि earth. नाम लिया जाता है उसे वैकुंठ So या स्वर्ग में wherever जाने की there जरूरत नहीं, is chanting of the वह holy name, then there is हमेशा no वहाँ need to हरि go नाम to का the higher वैकुंठ का planets, माहौल प्रकट कर देता है। because by just देखिए chanting the holy वैकुंठ में क्या names, होता है, the ब्रह्म संहिता में Vaikuntha कह रहे is हैं, manifested कथा on the दानम earth. नाट्यम गमनपि, वहाँ कथा है, वहाँ गान है, वहाँ नाट्य है, वहाँ रास लीला है, वहाँ गमनपि, वहाँ चलना भी है तो नाचते हुए चलना है। So there even देखो people वैकुंठ में walk like भगवान के धाम में, dancing. अब आप लोग भक्ति करते हो भगवान के So धाम we में तो all आप are लोग doing the चलोगे, pure devotional service of the Lord. So someday you तो all will वहाँ go to जाना the है, eternal भक्ति abode of the प्रैक्टिस तो Lord. होनी चाहिए। So when we have to go जब there, भगवान के we धाम should में practice यात्रा what we करेंगे, have to वहाँ do है ही there. क्या, तो वहाँ So what we कथा are है, supposed to do there, we have to तो listen to कथा the सुनने की Katha. प्रैक्टिस करनी So we चाहिए। फिर should वहाँ जाके practice listening कथा to में नींद the आ जाए, pastimes of फिर the Lord. भजन सुनन तो थप्पड़ मारेंगे, Otherwise, फिर the गानम गानम associates of Lord फिर will गाना है, beat us up. फिर Then कथा गानम we have नाट्यम, an और opportunity to नाट्य sing, शब्दित माने लीला, and there are जैसे ड्रामा the होता है ना, लीला है, drama तो or वहाँ लीला pastimes of है, the Lord और गमनपि वहाँ नृत्य है। and dancing. तो कथा सुनने का अभ्यास, So, गाने का अभ्यास, so we all should ड्रामा नाटक practice करने का अभ्यास और नृत्य का all अभ्यास। these activities. वहाँ वहाँ आप वहाँ कीर्तन शुरू होगा और नृत्य नहीं करोगे So if तो there is फिर a वहाँ के Sankirtan in पार्षद the आपको eternal abode ताना of the मारेंगे, वो आपको Lord, नृत्य में and दबा you're देंगे, not dancing, then और the फिर वहाँ नृत्य associates करने of कोई Lord will आएगा kick तो you जो out. वचन है भूंडा लाक्षो, And if जो you don't अच्छा नहीं know लगता, how तो to अभी से ही dance, नृत्य then का you अभ्यास will करना चाहिए, be odd man और out. So होना चाहिए better let's ऐसे भाव से practice, and नाचते so हुए। let's dance for a while and do Sankirtana. राधे मेरी स्वामिनी, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित Hare Krishna, भगवत कथा and अनुरागी I welcome पधारे you हुए all भक्त वृंद, who इस have सभा को gathered here, परम सुशोभित करने वाले especially
the अंतर्राष्ट्रीय exalted वैष्णव devotees भावना or के senior devotees of International इस्कॉन Society के of Krishna वरिष्ठ Consciousness भक्तजन Iskcon, who have decorated दूर दूर से this assembly. देश विदेश से I फेसबुक also मीडिया welcome के you माध्यम all से who have gathered इस here through कथा the का medium श्रवण of करने वाले Facebook, समस्त YouTube, through श्रोतागण all the parts of the एक बार world. बड़े भाव से I especially welcome भगवत प्रेम the प्राप्त host करने हेतु who has ये सुंदर भागवत organized this कथा का beautiful आयोजन katha करने वाले to achieve Krishna श्री Prema. चतुर भाई Chatur और Bhai कमला माता का ये and पूरा Kamla परिवार Mataji's family, जिनमें प्रमुख है in हमारे which वडील वरिष्ठ राधा our श्याम सुंदर प्रभु senior Sri सविता Radha माता Shyamsundar Prabhu and Savita और Mata, उनकी सुपुत्री भूमिका बहन अमित कुमार daughter Bhumika Ben, her husband शार्लोट से Amit Kumar, Charlotte सुनील from प्रभु Charlotte, पारुल Sunil माता Prabhu, Parul Mata, और मनीषा बहन संजय Manisha कुमार Ben, and Sandeep और सभी Kumar, बाल गोपाल and all श्रेला the kids, दीपा दिया Srila, Deepa, आरती किशन Aarti, Kishan, ऋषि राधिका Rishi, Radhika. आप सभी भक्तों का I श्रीमद् welcome भागवत you कथा के all on the तृतीय दिवस में third day पुनः एक of बार the Katha हार्दिक once again, स्वागत एवं and आप सबके चरणों में our humble प्रणाम obeisances at your lotus feet. राधे श्याम। Radhe Shyam. पता नहीं 2-3 दिन से थोड़े विघ्न आ रहे हैं Since last 2-3 days, we are facing शुरू होने some में सब देरी हो रही trouble है while starting, and लेकिन वेदों में लिखा it's है becoming little late. श्रेयांसी But बहु विघ्नानि Vedas जब mention आप कोई that श्रेष्ठ कार्य करोगे when you're about to तो start अनेकों a प्रकार great के विघ्न आएंगे feat, then you will विघ्न में भी face बड़े विघ्न नहीं है many कई kinds of दर्जे के विघ्न obstacles. है हैं? So it's not that we're लेकिन जो facing भी है some सब ऐसा extreme obstacles, पानी हले છે यमुना but बह रही है પેલા શ્વાન બતક small નાચે છે technological glitches. तो So the background is beautiful with the Yamuna तो कुछ water विघ्न ही flowing. सही थोड़ी देरी से ही सही So even लेकिन though we are बहुत a bit अच्छा late, but दर्शन still लाभ हम सबको we are बिल्कुल बिल्कुल benefited प्राप्त हो रहा है by seeing the live darshan of the deities. श्रीमद् भागवत भ्रमर गीत So Shrimad Bhagavatam, परम Bhramar पूज्य Geet, or the song of the गोपियों के honeybee. भाव की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे So हैं we are going to listen to the भगवान श्री mellows कृष्ण of ने the उद्धव जी को gopis. मथुरा से Uddhav ji ब्रज was भेजा sent है by Lord Shri Krishna from सबसे Mathura to पहले तो Vraja. नंद यशोदा के घर पर जाते हैं First of all, he goes to the एक home बाबा of यशोदा मैया को Yashoda Mai and Nand Baba, मनाने का and प्रयास किया throughout the night he tries to लेकिन convince उद्धव जी them, हार गए but Uddhav ji is defeated. सुबह उठकर उद्धव जी In यमुना the स्नान morning, करने गए he goes to दूसरी take a ओर dip कल in the हमने सुना Yamuna ji. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में In the गोपियां उठ early गई morning hours, that is the Brahma कृष्ण के घर में Muhurta, सोना तो था नहीं लेकिन so सुबह उठकर स्नान all आदि the करके denizens of Raja, गोपियां अपने घर they के कार्यों all में व्यस्त woke हुई up early नंद and गोपाल ने started their देखा Manglacharan कि and नंद बाबा their के घर work. के बाहर And then they saw एक that रथ खड़ा है there was a chariot standing in और front गोपियां of निकट आकर Nan देखती हैं कि ये Maharaja's कोई home. साधारण रथ नहीं, ये वही रथ And है they said that this is जिसमें not an बैठकर ordinary भगवान कृष्ण chariot. और बलराम This is the ब्रज से chariot which मथुरा गए थे। took Krishna and सारी Balram गोपियां from एक एक Braj to करके वहां Mathura. पर जमा हो जाती हैं They all, the gopis जोर देखा gathered तब there आपस में गोपियां चर्चा कर and रही they हैं start कि ये रथ discussing यहाँ पर क्यों आया होगा, how ये come कौन this लेकर आया होगा, chariot is here, ये रथ who यहाँ has क्या bought कर it रहा here, है। and what is the फिर purpose of गोपियां it अपना standing उत्तर here. भी देती हैं, कल हमने सुना So yesterday जब we इस heard प्रकार से how रथ gopis को were लेकर discussing all गोपियां this. चर्चा कर ही रही थी
And they were just discussing by the time Uddhavji reached the gopis after taking a name. And that situation is writ- say, spoken by Shukdev Maharaj Goswami from the 47th chapter, 10th canto of Shrimad Bhagavatam, like this. Krishna Nucharam Vajastriya Pralambabahum Navakanjalochanam Pitambaram Pushkarmalinam Lasan Mukharavindam Parimrushtakundalam। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के ये श्लोक मुझे तो मंत्रों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। These are the verses from the 10th canto of Shrimad Bhagavatam. And these words appear like mantras, they're so pure. Shukdev Goswami says that the gopis were discussing, and in the meanwhile they saw Tamaviksha, they saw, and what did they saw? That a messenger of Lord Sri Krishna is here or is coming. Krishna Nuchara means messenger of Krishna. First, they thought that has Krishna himself came because he was wearing Krishna's yellow clothes. But they realized that he is just a messenger of Lord Sri Krishna. He is not Krishna. So Vraja Striya means the women of Vraja. So Acharyas have written quite a few things about it, but I'll not discuss that. I want to go with the flow. Said that these are the women who has taken the part in Rasa Leela, who were not too old, not too young. And these women are discussing here. And what did they saw? Messenger of Krishna. And how does he? He was Paralambabahu. He was looking like Krishna. Paralambabahu means his arms were long. That means too long. Pralambabahu means too long. So out of the 32 qualities, the one quality is that they have long arms. And people like us who have, so their hands are long, their forehead is long. So there are 32 qualities of a Mahapurusha or a great soul. So Krishna's and Chaitanya Mahaprabhu's and Ramji's, all these personalities had long arms. Pralambabahu. Then he says Navkanjalochanam. And Uddhavji's eyes are similar to Lord Sri Krishna, like his hands. And how are his nails?
So let me show you what Acharyas have concluded in the below verse in front of your screen shortly. रज सत्वाभ्याम कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? So रजः Krishna's eyes are सत्वाभ्याम माने Rajaha, बहुत स्वच्छ नेत्र है. that means कृष्ण very, के नेत्र very clear बिल्कुल eyes. नया कमल खिलता है ना सरोवर में, They are as सरोवर good में as नया कमल खिलता है, वो नया new कमल lotus कोमल भी होता है, flower, is स्वच्छ होता है, very और soft उसमें and अरुणिमा उसमें clean, थोड़ी लालिमा होती है. and it has some जैसे कृष्ण के reddishness. नेत्र स्वच्छ है. Similarly, અમારા ગુજરાતીમાં અમારે Krishna's કહેવત eyes આવે are કે હવારમાં જ્યારે જાગીએ ને ત્યારે આમાં પછી આપણે કરવું પડે. અમુક લોકો એ બી ના કરતા હોય, लेकिन कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? बिल्कुल स्वच्छ है. एक his रज eyes are सत्वाभ्याम, और clean दूसरे कैसे हैं? अरुणिमा लालिमा, कृष्ण के and नेत्रों में लालिमा है. they have some reddishness. तो यहाँ पर आचार्य ने अपनी टीका में लिखा Acharya कि रज says सत्वाभ्याम कृष्ण के नेत्र सृष्टि पालक. कृष्ण के नेत्र ही his eyes, अपनी दृष्टि से सृष्टि का पालन by करते हैं. his eyes, takes care of everything in the और material कृष्ण की world. दृष्टि जिस पर पड़ जाए, तो दूसरी लाइन And में नीचे टीका में if अप्राप्यस्य प्राप्ति. Krishna's eyesight हमारे falls on जीवन में someone, कई सारी then ऐसी वस्तु हैं जो हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है, बड़ी there are कठिन है, so बड़ा many मुश्किल हो जाता है things that we उसे are not हासिल able to करना, उसे प्राप्त achieve करना. in this world is लेकिन कृष्ण extremely के नेत्र difficult. यदि हमारे ऊपर But पड़ गए, कृष्ण if की दृष्टि Krishna यदि हमारे ऊपर पड़ गई, तो eyes fall on अप्राप्यस्य us, जो चीज then हमें अप्राप्त we है will be able उसकी to प्राप्ति achieve हो जाएगी. whatever is अर्थात हमारे impossible सारे to मनोरथ achieve. पूर्ण हो जाएंगे So that यदि means that कृष्ण की all दृष्टि our हम पर हो गई. desires और will be श्लोक में क्या fulfilled है? if नवकंज Krishna लोचनम. sets his उस पर eyes आचार्य on ने us. टीका लिखी है नीचे कि कृष्ण के नेत्र एक तो So we are discussing जैसे about the अपनी आंखों eyes से of सृष्टि Krishna, का how पालन the करते eyes हैं, are, and what और दूसरा acharyas have mentioned or अप्राप्यस्य explained. प्राप्ति. तब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई हमें तो अब So कोई चीज नहीं चाहिए, some लेकिन people जो might है say that we उसका don't रक्षण want होना anything, चाहिए. but whatever इसलिए we कहते have हैं should be protected. अप्राप्यस्य So प्राप्ति. he says that प्राप्यस्य जो चीज आपको प्राप्त हो whatever चुकी है you haven't रक्षणम, achieved, उनकी you will रक्षा हो get, जाएगी. and whatever you have achieved will be हम protected. से भक्तों को और कोई भौतिक मटेरियल वस्तु नहीं चाहिए, हमें तो So भक्ति प्रेम चाहिए. तो we टीका में devotees कृष्ण की just need दृष्टि यदि हम पर पड़ जाए तो कृष्ण pure भक्ति devotional और service प्रेम towards की the Lord, that प्राप्ति is होगी. bhakti. और But कृष्ण की दृष्टि से वो so if भक्ति और प्रेम का रक्षण his होगा, eyes fall उसकी on रक्षा us, हो जाएगी. then we will get his ये love है कृष्ण के नेत्र का and महिमा. protection of our सो bhakti तम lata beach, पश्य that is the कृष्ण seed of our अनुचरम व्रजत bhakti स्त्रिय or pure devotional service towards the प्रलंब Lord. बाहु नवकंज लोचनम, नवकंज लोचनम. फिर आगे कहते हैं Then he says further, पीतांबर पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन. उस उद्धव जी ने पीतांबर धारण किया. Uddhav ji was पीतांबर wearing भगवान कृष्ण धारण Lord करते हैं. Krishna's yellow मतलब उद्धव जी ने कृष्ण clothes का ही or पीतांबर धारण outfit. किया था. He was उद्धव जी wearing ने कृष्ण का Lord Shri पीतांबर कृष्ण Krishna's का वस्त्र धारण किया था. clothes. इससे एक अर्थ ये बनता है And there कि is उद्धव another जैसे interpretation शुद्ध that भक्त the pure भगवान का devotees of the Lord, वस्त्र, like Uddhava, भगवान का तदीय पहनना बहुत पसंद करते हैं. prefer to लेकिन wear हम भी भक्त the हैं, clothes तो of उद्धव the Lord. भगवान की जो वस्तु है, भगवान का जो If प्रसाद है, we उसी are को धारण करना पसंद करेंगे. devotees of the Lord, then we should पीतांबर. try to wear और फिर the आगे things कहते हैं from the पुष्कर Lord. मालिनम लसन. ये बहुत सुंदर बात है. Pushkara तीसरी Malinam. लाइन में In पुष्कर the third मालिनम line, लसन. लसन माने बहुत lesson. सुंदर. Lesson means उसने extremely माला धारण की beautiful. हुई थी. किसने? Pushkar उद्धव Malin जी ने. is the flower और जब garland उसने तब that दृश्य Uddhavji is गोपियों ने wearing. देखा, And the तो gopis are उद्धव जी seeing ने this. पुष्कर फूलों की, कमल की वो माला धारण की हुई है. यदि आपको याद है, If you remember, उद्धव जी के गले में ये जो माला है वो किसने पहनाई थी? who has
given this उद्धव जी के गले में माला garland किसने पहनाई थी? to Uddhavji, भगवान कृष्ण ने। which कृष्ण ने जब was मथुरा से भेजा तो given स्वयं to कृष्ण ने him पहनाई ना by उद्धव जी Lord के Shri हाथ में Krishna भेजा। himself. अब उद्धव जी मथुरा से निकले, So मतलब कल he शाम को निकले थे, एक रात started बीत गई from और दूसरा Mathura. दिन शुरू हो गया। So the whole तो आधा night दिन, and एक half रात और day दूसरा दिन has शुरू हुआ, तो वो passed. माला के फूल So मुरझा नहीं the जाएंगे? the flowers would अच्छा, have उद्धव जी माला wilted. लेकर फिर रात को सोए भी होंगे, He might have तो वो slept माला also with those बिखर नहीं flowers. गई होंगी, बिगड़ नहीं गई होंगी। लेकिन यहाँ Wouldn't पर had the इतनी garland be पुष्कर wilted? मालिनम लसन, वो बहुत सुंदर माला लग रही थी। But the अब देखिए, garland was इतनी looking पुरानी extremely माला हो beautiful चुकी थी, after लेकिन one फिर भी and a half सुखदेव or कह two रहे हैं कि days. बहुत But सुंदर still, लग रही थी। Shukdev ji is saying that इससे the दो बातें garland हमें was समझ, looking extremely भागवत को ऐसे beautiful. ही समझना है ना, एक एक So छोटी छोटी बातें। we should learn अब दो or दिन के understand बाद वो Bhagavatam फिर with all ऐसी these हो small, जाती है। small things. लेकिन यहाँ उद्धव के गले में सुशोभित हो रही थी। So इसका the एक garland पॉइंट ये है कि उद्धव जी ने was भगवान beautiful. कृष्ण के The द्वारा दी reasons हुई are माला को that, संजो कर रखा था, that बिल्कुल संभाल कर Uddhavji रखा has था taken great कि care माला के of the पुष्प garland और फूलों offered की by पत्ती भी Lord Shri गिर न Krishna, जाए, that माला not even कहीं a single हवा में ना petal आ should जाए, fall कहीं कुचल ना or जाए, बिल्कुल संभाल कर get उद्धव जी ने under उसको the रखा। feet of anyone. So he has taken great और care. दूसरा, And पुष्कर second, मालिनम लसन, बहुत सुंदर सुशोभित हो रही थी। दूसरा कारण, क्योंकि and the ये second श्याम reason, सुंदर के गले से निकाल कर पहनाई because थी। this is the not an चिन्मय ordinary कृष्ण garland, ने अपने it was a चिन्मय शरीर garland से उस taken माला from को Lord निकाल कर दिया था। Krishna's. वो माला भी चिन्मय हो चुकी थी, इसलिए 2 दिन क्या 2 साल Neck. पुरानी भी हो जाए, So कभी even उसमें if कुछ it's नहीं होने 2 years वाला। old, तो it पूज्य will उद्धव still जी के remain the स्वरूप को same, देख रही हैं। because आचार्य the गण कहते garland हैं became कि गोपियां उद्धव जी में spiritual भगवान कृष्ण का like दर्शन कर रही Krishna हैं। himself. आचार्यों ने गोपियों की दृष्टि को अपनी लेखनी में बहुत सुंदर जोड़ा। Acharyas have आचार्य mentioned दृष्टियों about के सहारे the कहते हैं प्रदीप gopis' बाण रूपी glances very भगवान श्री beautifully. कृष्ण की ये लंबी भुजा They say that the long भगवान श्री arms of कृष्ण Lord की Shri क्रिया Krishna शक्ति है। इस लंबी is भुजा के the द्वारा भगवान ने क्रिया potency of the करके Lord. संसार He चलाया। works to नवकंज make this लोचन, world भगवान की work आंखें through his long arms ज्ञान and through शक्ति his है, eyes और नेत्र रूप भगवान का is दर्शन his ये भगवान meditative की potency. समर्थ ज्ञानेंद्रिय है। And these are his मणिमंच कुंडल, भगवान श्री कृष्ण के मणि लगे हुए कुंडल साक्षात सांख्य योग है। his earrings उस are भगवान Sankhya श्री Yoga. कृष्ण का श्रवण कान His ज्ञानेंद्रिय है। जिस ears are प्रकार कृष्ण जो अपने गले Gyanendriya. में माला पहनते ना, His वो कृष्ण की garland कीर्ति है। is his माला से, fame. माला में जो सुगंधित पुष्प लगे हुए And हैं all the वो कृष्ण flowers और कोई नहीं, who अमलात्मा have परमहंस fragrance, योगींद्र मुनिंद्र they भगवान श्री are कृष्ण all के शुद्ध भक्त the ही कृष्ण की माला exalted में pure फूलों के रूप में devotees of लगे the हुए Lord हैं। who और are फिर in the neck of उस Krishna कृष्ण की as माला के ऊपर देवता flowers. गुंजार करते हैं। And there भागवत are गीता में लिखा हुआ है, देखिए honeybees पीछे, on कि that garland, फूलों का गुंजन and भक्तों के that द्वारा किए गए humming of that भगवान का गुणगान ही तो bees है। is similar to the और फिर chanting of the कृष्ण जी holy को names कहते हैं by devotees. पीताम्बरम। उद्धव जी ने कृष्ण का पीताम्बर पहना था, कृष्ण And पीताम्बर धारण करते हैं। Uddhavji was पीताम्बर wearing जो है the yellow clothes of Lord Shri ऊपर एक Krishna. आवरण है, So these yellow जैसे clothes are a पीताम्बर covering पीले on रंग का Lord Shri होता है Krishna. और So हमारे यहाँ Pitambar is गोल्ड, of yellow, सोना भी पीले रंग का होता है। and even gold तो is of पीताम्बर से एक yellowish शिक्षा color. हमें ये भी मिलती है So कि we ये get पीताम्बर one कृष्ण के ऊपर एक आवरण है। understanding that पीताम्बर गोल्ड this रंग का होता है, तो ये गोल्ड, ये सोना है। yellow dress is a जब curtain, सोने and के उपलक्षण से लेंगे तो ये जितनी भी माया है, ये so all माया this भगवान कृष्ण के material आवरण है। world जब तक हमारी denotes this बुद्धि yellow इसकी सोने dress, में माया and रूपी आवरणों में बसी until रहेगी तब तक ये unless we are वास्तविक भगवान entangled का in दर्शन नहीं this होगा। curtain of तो इस प्रकार material से wealth and opulence, we won't be able to और achieve लसत him. मुखार विंदम, उद्धव जी का बहुत सुंदर मुखार विंद। And he has a beautiful आगे कहते face, हैं, Mukhar Vind. जब उद्धव जी को, पहले तो क्या हुआ Further, कि he says, बहुत
So earlier, the gopis were upset, angry, and anxious that this Akrur is here who has taken Lord Shri Krishna with him. But when they saw Uddhav ji, they they became suvismit, or it's mentioned as Suchismita. So that means that they became happy by seeing Uddhav ji. He was almost looking like Lord Shri Krishna. So they smiled at him, and or they got confused. Who is he who looks like Lord Shri Krishna? So he is looking extremely beautiful. But why is he wearing Lord Shri Krishna's clothes and ornaments? So, in this manner, gopis gathered around Uddhavji. First, they thought that he's a thief who has stolen the clothes of Lord Krishna. So, Nand Baba's village is extremely beautiful. If if some if somebody have done something like this, they would have beaten him up. But Brajvasis are better than that. They were looking at Uddhavji and remembering Lord Shri Krishna's lotus feet. You might have heard about Uttama Shlok. The Uttama Shlok means in the lower screen. So, Uttama Shloka. So, there are so many verses in the Vedic scriptures, but the best of the verses in which the glories of the Lord are sung, that is why they are mentioned as Uttama Shloka, or the best verses. Tam means the mode of ignorance, and Ud means who has not even an iota of the mode of ignorance. That is why it is called Uttama. So, so where Krishna is there, there is no point of being darkness of ignorance. So there can never be ignorance around Krishna. So that is why these verses are called as perfect or Uttama Shloka. The third meaning is that Ut means Utkrishtanam, Ma mane madhya. So the, perf- the people in who are perfect, and in their his fame is sung, and he is more perfect than them. That is this reason his these verses are called as Uttama Shloka. So the gopis gathered around Uddhavji and they started inquiring from him. What do they ask? In the next verse,
प्रशये तम प्रशेण्या सुस्कृतम। गोपियां कहती हैं कि The gopis जान say सकती that, हैं कि आप कौन हो? can we know that who are क्या you? हम जान सकती हैं कि आप कहाँ से आए हो? Can we know that from where have you क्या हम जान arrived? सकती हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना है? And what is the purpose of your गोपियां visit? बार बार उद्धव जी को पूछ रही है, Gopis are लेकिन asking जैसे कि again मैंने and आपको again. कल कहा था, But as I नंद mentioned यशोदा से yesterday, मिलकर that after उद्धव meeting जी इतने Nand शांत हो Maharaj गए and Yashoda Rani, कि गोपियों के सामने Uddhavji उनको became कहने की numb हिम्मत ही नहीं हो and रही he थी। was not able to utter a single word. सो गोपियों ने उद्धव जी का सत्कार किया, So the विनय gopis से welcomed पूछकर Uddhavji मधुर वाणी से पूछा and with sweet कि words they कृपा करके, asked. पहले तो गोपियों ने क्या किया So first कि भाई ये नंद the बाबा के घर के आगे क्यों inhabitants of खड़े हो? Braja said that, don't, उद्धव जी let's आपका not काम है, stand in हमारे साथ front चलो। of Nand गोपियां Baba's उद्धव जी को home. लेकर गई, दूसरी लाइन में They कहते हैं took him रहस्य। to रहस्य माने एक एकांत जगह में some लेकर गई, place that was और उस secluded, रहस्यमयी एकांत जगह में जाकर गोपियों ने आसन दिया, and उद्धव there जी they को gave आसन him a पर बिठाया seat to और sit. आसन पर आविष्ट करके And सारी after गोपियां that, पूछने लगी, बताओ अब आप they कौन हो, ये बताओ, started asking ये him, रथ यहाँ who पर are लेकर क्यों you आए हो, and why you ये have कृष्ण ने come on कपड़ा this आपने क्यों chariot? पहना है? Why you're एक wearing के बाद his एक गोपी सब clothes? उद्धव जी को पूछने लगी, So उद्धव जी one by one they कंफ्यूज। were asking so many जब questions. उद्धव Uddhavji जी got कुछ नहीं confused. बोले, And when Uddhavji was उद्धव जी unable to चुप है, say तब anything गोपियां ही अपनी and ओर he से is बोलने mute, लगी, हम जानते हैं यहाँ क्यों आया है। then they started speaking on his विज्ञाय behalf. We संदेश know that हरम why you're रमापते, here. ये उद्धव Okay, लक्ष्मीपति this कृष्ण का Uddhav संदेश लेकर आया है। has come here to ये give आदमी the message of Lord इसका Shri संदेश Krishna. विज्ञाय संदेश हरम, विज्ञाय माने ज्ञात कराने के लिए, देने के लिए, Vigyai कहने के means to लिए, give, संदेश देने के लिए आया है। Sandesh is the किसका संदेश? message, रमापति। अब देखो देवी का Ramapate is संबोधन, Lord Shri Krishna, वैसे तो यहीं or से भ्रमर the गीता शुरू husband है, एक्चुअली of आगे से होगा, Goddess लेकिन of ये हिंदी Fortune. का यहाँ से बांध रहा है। ये रमापति का मैसेज लेकर आया है। अब रमापति शब्द से गोपियों ने प्रहार कर दिया, So बोले this was रमापति the माने attack. लक्ष्मीपति। Ramapati means the लक्ष्मीपति माने अब husband कृष्ण of जो Goddess है, of Fortune. हम So that means ब्रजवासियों that का पति now नहीं रहा, he's अब no longer कृष्ण our husband. Now मथुरा के राजा हो गए हैं। he is the king of Mathura. कृष्ण अपने सेक्रेटरी को इतना बड़ा सोने का रथ दे सकते हैं, He has तो given his स्वयं खुद तो secretary कितने बड़े a रथ पर gold चढ़ते chariot. होंगे। So जब imagine अपने आदमी को how इतने सारे opulently स्वामी he इतने अच्छे might कपड़े be living. आभूषण सब दे सकते हैं, तो वो तो कितना ठाठ में होंगे। तो रमापते लक्ष्मीपति का That संदेश is why he is addressed लेकर as ये आया है। Ramapate. ये गोपियों का व्यंग था। So this was sarcasm गोपियां from उद्धव जी से कहती हैं, the denizens of तुम Raja, the gopis. कृष्ण के अनुचरी अनुचरी हो ना? So they confirmed that, उद्धव जी are you बहुत his घबरा गए, messenger? सहमे हुए, बोलती बंद, Uddhavji is anxious गोपियां and कुछ he is समझ नहीं unable to आता क्या speak. करूं। He is गोपियां unable बोली, to हम understand what जानती should हैं I तुम do. किस किस लिए यहाँ He पर said आए हो। that we know that why you are here. तुम यहाँ पर आए हो, You are here जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। तुम कृष्ण के यदुपति, कृष्ण के पार्षद हो। you are associate of Lord Shri Krishna, गोपियां that is कहती थी, Parshad. कन्हैया कहती थी, Earlier they गोपाल used to कहती call थी, him Gopal, लेकिन अब Kanhaiya, गोपियां कृष्ण को but यदुपति now कह रही है। they ये are भी गोपियों addressing का him व्यंग as है Yadupati कि अब तो वो राजा हो गए हैं, because he उनको has हमारे now लिए become मिलने का king. कोई टाइम अवकाश So he नहीं है, doesn't have any time वे to अत्यंत meet us. निष्ठुर हो चुके हैं। He has और become अ, stone-hearted. वैसे भी कृष्ण का हमसे क्या नाता, And what is his उन्होंने relationship with आपको us? यहाँ पर भेजा है। He has गोपियां sent कहती you है, here, the gopis उसने आपको say, यहाँ पर भेजा है, तो he has sent भद्रे you here. प्रेषित पितरो भवान Matre प्रेरित preshito शिष्या। pitro, उन्होंने अपने माँ बाप को सांत्वना देने के लिए so ही आपको that you भेजा होगा can ना। pacify his कृष्ण ने parents, हमारे लिए तो Nand आपको भेजा ही Baba नहीं and होगा, Yashodarani. कृष्ण He ने अपने hasn't माँ बाप sent के लिए you आपको भेजा होगा, for वो us, जानती but है। for his parents. We are aware of that. और वैसे तो कृष्ण को अपने माँ बाप से भी प्रेम And नहीं है, although he doesn't even यदि love माता his पिता से भी parents, वो प्रेम करता तो भी had he ब्रज had राजा था। loved them,
then he would have कृष्ण ने returned आपको to यहाँ इसलिए Vraja. भेजा है But he has sent you कि यदि here कृष्ण के विरह में उनके माता पिता so मर that गए his तो parents, दुनिया के लोग उनको God गाली forbid, देंगे should कि die, कितना then he will be निष्ठुर था criticized as कि अपने माँ बाप how को भी मिलने नहीं cold आया। hearted this boy तो was लोक who लज्जा के didn't कारण even लोगों में come अपयश to न meet हो his जाए parents. So, इसलिए to कृष्ण ने आपको भेजा protect है his name from उनके माता defame, पिता को समझाने he के लिए। has मतलब sent गोपियों का you कहने का भाव क्या है for कि तुम यहाँ पर आए हो convincing his parents or तो to हमारे लिए pacify तो his कृष्ण ने parents भेजा ही नहीं and उद्धव not को for कृष्ण us. ने नंद यशोदा के लिए एक्चुअली कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के लिए Actually, भेजा है Uddhavji लेकिन was गोपियां sent by चाहती Lord हैं Shri तो Krishna रूठना for रूठना the भी है और gopis or the मरना भी है residents of Vraja, but they are accusing him that तो गोपियां कहती हैं कि he has been sent गोपियां कहती हैं कि for तुम आए हो Krishna's parents. अपने माँ बाप के लिए हैं अन्यथा तुम अपने माँ Otherwise, बाप कृष्ण के माँ बाप नंद यशोदा के लिए नहीं आते तो अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणम न चक्ष्महे तो अन्यथा इस ब्रज में otherwise, in this कृष्ण को Vraja, स्मरण करने के लिए हमें कोई दिखाई ही नहीं देता है we have nothing कृष्ण के लिए इस to ब्रज में कौन remember बचा this है Krishna. कि Krishna हम has उनका nobody स्मरण करें here कृष्ण के लिए whom ब्रज में Krishna केवल can उनके माँ remember. बाप हैं जिसका Only his कृष्ण को parents are स्मरण हो there सकता है who might be और remembered by इसीलिए him. That is the reason आपको भेजा है he has sent अपने you. उनके माँ बाप को समझाने के लिए इस प्रकार से गोपियां So, पूर्ण रूप से in this कृष्ण पर manner, आरोप लगा रहे आरोप क्यों they लगा रहे are कितने आरोप आप accusing सुनते होंगे Krishna आपस में and they start accusing him one by उद्धव one. जी आए थे ज्ञान देने के लिए Uddhavji came to give the आपने knowledge. पढ़ा लिया कि हमारे ब्रज में एक स्थान है जहां पर ये घटना घटी So, ज्ञान in गुदड़ी Braj, there आगे is हम जाएंगे वृंदावन a place जहां गोपी उद्धव का मिलन हुआ था उस स्थान है where the ज्ञान गुदड़ी gopis met. The place is उद्धव called गुदड़ी लेकर Gyan आया था Gudri. गुदड़ी माने ज्ञान रूपी गुदड़ी लेकर आया था So उठाने के लिए Uddhavji came सांत्वना देने with के the लिए लेकिन गोपियों ने उसका चिथरा चिथरा कर दिया फाड़ दिया उद्धव की ज्ञान रूपी गुदड़ी को हैं? उद्धव um, जब गोपियों से मिले अब ये भ्रमर गीत के he बाद bought आप his सोचते knowledge, हैं but कि the कृष्ण ने मुझे gopis ज्ञान have देने के लिए भेजा है कि इन लोगों से ज्ञान torn लेने के लिए every भेजा bit है of his मुझे तो knowledge. ये समझ में नहीं आ रहा Uddhavji got confused that whether I was here to deliver knowledge or तो to अब receive बहुत the भारी same. शब्द कह दिया So now they कि are using a very कृष्ण के माता strong पिता word. नंद और यशोदा को सांत्वना देने के लिए आए हो अन्यथा श्लोक में अन्यथा गोव्रजे Anyatha means तस्य otherwise. कृष्णस्य स्मरणीयम न चक्ष्महे हमको तो दूर दूर तक ब्रज में कृष्ण Otherwise, को in स्मरण Braj, करने लायक there कोई is नहीं दिखाई दे nobody रहा है who is capable कृष्ण केवल of being अपने माँ बाप remembered को by Lord जानते Sri हैं केवल Krishna. उसी के लिए He आपको भेजा might है have remembered just his parents. That is why he और has बात sent भी you सत्य here. है अब देखो गोपियां नीति अब बता नहीं ये कहाँ से ये सब जानकर आई बहुत भारी बात So करती हैं the और gopis बात are भी telling सत्य the है principle, and कि इस this is दुनिया में true, बड़े बड़े लोगों that को even the highest अपने संबंधियों से people or कभी position लगाव छूटता नहीं है are attached to their स्नेहादि family बंधु नाम मुनेर and अपि their दुस्त्यज relatives. बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अपने It सगे is संबंधियों को स्नेह difficult for करना even the कठिन होता great है sages to detach हमको themselves कृष्ण from की their कोई नहीं है family. रिलेशन में कोई And कुछ लगती in नहीं है relationship, कृष्ण we का एक ही are रिलेटिव यहाँ रहता है नंद और यशोदा nowhere तो near. उद्धव We तो have no आए नंद relationship with यशोदा him. के The लिए वो only अपने स्नेही relationship he है has is of his तो बड़े parents. बड़े मुनियों के लिए भी अपने स्नेहियों को भूलना अपने So when it स्नेहियों is को छोड़ना कठिन होता है difficult to detach from तो the कृष्ण ने familial आपको भेजा है obligation by उनके स्नेही even the उनके great संबंधी sages, नंद और यशोदा के लिए हम गोपियों के लिए नहीं that is why he has sent you for his आगे parents. एक महत्व मुनेर अपि दुस्त्यज Munerapi ये sudastuje स्नेह बंधन जो है ना means this ये रिलेशन familial फैमिली पुत्र bondage or पुत्री obligation, पति पत्नी ये attachment, संबंध है इस संबंध को छोड़ना इसको भूलना to forget हम that जैसे साधारण लोगों की तो for बात दूर रही मुनेर people, अपि दुस्त्यज बड़े बड़े even मुनियों the के great लिए भी कठिन sages, है is impossible feat to बड़ी achieve. नीची अवस्था में भी यह स्नेह बंधन
छूटता नहीं है। even at the highest position, मैं आपको it दूसरा still सुनाऊं, is there. भगवत गीता में In Bhagavad भगवान ने Gita, स्वयं जिनको अपनी विभूति घोषित कर दी, Lord Shri Krishna कृष्ण ने अपनी विभूति घोषित कर दी, ज्ञानी addressed नाम as उषनाम कवि। Vibhushit. हे अर्जुन, मैं ज्ञानियों में He उषनाम says that शुक्राचार्य हूँ। in knowledgeable persons I am भगवान की Shukracharya. ज्ञानी रूपी विभूति जो है वो शुक्राचार्य So बन he गई। is the epitome of Krishna's लेकिन knowledge. शुक्राचार्य जैसे महाज्ञानी स्वयं But भगवान की विभूति होकर भी अपने although he स्नेहानुबंधन नहीं छोड़ is सके। a देखो गोपियां गवार है, form कोई of पूछने की नहीं है, Lord, लेकिन but still वेदों he के was बीच में unable to गोपियों के बीच में detach प्रकट हुई। himself from his family. स्नेहानुबंधो बंधुनाम मुनेर अपि सुदुस्त्यज, बड़े बड़े मुनियों के लिए दुस्त्यज। शुक्राचार्य की बेटी जिसका नाम था देवयानी, Shukracharya had a daughter, her name was Devyani, वो सखी थी वहां के राजा वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा की। and she was a और friend घटना of ऐसी घटी the king's कि daughter शर्मिष्ठा Sharmishta, ने धक्का देकर देवयानी को कुएं में फेंक दिया, and और a फिर situation वहां के arose राजा where ने और उनका देवयानी के साथ विवाह किया। Sharmishta threw सारी Devyani कहानी in the मैं well, फिर आगे चलकर आप and सब जानते हैं she was कि saved देवयानी ने by बोला Yayati, कि and ययाति महाराज, in आपको अभी future दूसरी रानी से आपको संतान उत्पन्न नहीं करना है। that you cannot have beget लेकिन a फिर child दया from पर other queen, दया करके महाराज ने but पुत्र उत्पन्न कर दिए। having mercy देवयानी on को बुरा लगा, अपने पिता Sharmishta, शुक्राचार्य के पास they गई, begot a son. और And when शुक्राचार्य ने Devyani realized, and she देवयानी became के angry, स्नेह बंधन में and आकर he अपने दामाद के Shukracharya लौ को was so much जवानी में ही attached to पूरा कर his दिया, daughter that बूढ़े he होने का श्राप cursed दे दिया। his स्नेहानु son-in-law बंधो to बंधु become old even in his ripe young महाराज भरत age. अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले गए, But और the बिल्कुल king निष्काम Yayati भावी went to the निरंतर forest, भजन में लग गए, साधु and मुनि के स्तर पर पहुंच गए, फिर वो छोटे से हिरण में आसक्त हो गए। the Bharat स्नेहानुबंधो Maharaj बंधु नाम had detached मुनेर from अपि everything, but सुदुस्त्यज। he got attached to a deer आजकल हम लोग and he देखते हैं lost कि कई सारे लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, his मंदिर में बैठ जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं, position of Mahabhava. We have और seen फिर so साधु many people सन्यासी ब्रह्मचारी become बनकर किसी को अपनी Brahmin, बहन बना लेते हैं, किसी को brahmachari. अपनी माँ बना So, लेते हैं, so they और फिर make वहां some राखी बंधाते हैं। their तुम्हारे brother, राखड़ी बंधावी थी तो घरे sis, आओ, तो मंदिर sister में or शादी mother. जरूर रहती। So if लेकिन you स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेर want अपि to be a सुदुस्त्यज। brother or बड़े बड़े son, मुनियों then के what was the विनम्रता need to नहीं leave छोड़ your पाए थे कृष्ण, familial obligation? So और इसीलिए even कृष्ण ने great गीता में sages are unable to अपनों let के go साथ भी their बंधन familial मुनि भी नहीं attachment छोड़ and सकते relationship. हैं। परायों के साथ का बंधन जो होता है ना, वो केवल स्वार्थ के The, लिए होता है। the relationship with परायों के साथ जो बंधन हम लोग outsiders रिलेशन is रखते हैं वो स्वार्थ है, based लेकिन on our अपने selfish लोगों का जो motives. है, अपने अपने होते हैं ना, But वो गाना भी है ना, अपने तो अपने होते हैं। there is a song, right? हाँ जी बात है, आप अपने तो अपने होते बराबर हैं. कह रहे हैं। That is true. पराया फिर पराया ही होता है। तो यहाँ पर गोपियों का कहना ये है So here कि the उद्धव gopis जी, say that ये अपने Uddhavji, तो सबको प्रिय होते हैं, और इसलिए कृष्ण ने आपको everybody भेजा likes है their own, अपने स्नेही नंद और यशोदा को मिलने के लिए। and that is why हमारे he has लिए तो नहीं, sent क्योंकि you, हम तो पराई है ना। because अब we गोपियां don't समझ नहीं belong रहे हैं, to him. हम We तो have no पराई है, relationship with him. हम We पराई are के लिए हम क्यों strangers भेजेंगे। or unknown to गोपियां him. 8 दृष्टांत देती हैं They जबरदस्त। give 8 examples कृष्ण ने हमको पराई की तरह त्याग दिया। कैसे at त्याग दिया? how he आपको detached भेजा himself नंद from यशोदा us के लिए, लेकिन and हमको how he पराया did. समझा, और पराई की तरह कृष्ण भूल गए, त्याग दिया। 8 दृष्टांत देकर कहती हैं, They give 8 अगले references. श्लोक में आप देख सकते हैं, In the next verse, they say, अनियेषु अर्थ कृता मैत्री। कोई आदमी किसी अन्य पराये से मित्रता करता है ना, so तो if वो a मित्रता person का संबंध तब तक रहता makes है जब तक अपना friends with स्वार्थ कंप्लीट हो जाए। a person, then जैसे ही they अपना remain स्वार्थ friends कंप्लीट हुआ, till मित्रता का they संबंध खत्म।
their selfish motive is there. तो As soon जैसे as इस the कलयुग में, इस motive is संसार achieved, में the friendship is कोई over. मित्र अपने स्वार्थ को So in this material बनाने world, के लिए किसी to मित्र से मित्रता करता है, for their जैसे ही selfish स्वार्थ motive, they कंप्लीट हुआ befriend मित्र people, को छोड़ दिया, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते में। and once they achieve their ठीक goal, उसी they leave प्रकार their friend. कृष्ण Similarly, हमारे साथ मित्रता किए Lord Shri और Krishna जब became our स्वार्थ friend, समाप्त हो जाने पर and वो चले once गए। his desire was fulfilled, सो अन्ये he alienated शुभारंभया us. मैत्री यावद अर्थ विडंबनम, जब तक स्वार्थ है तब तक मित्रता करता है। एक This is the first दूसरा, reference. पुंसि Second, स्त्रीषु he क्रीडा says, यदवत सुमनः स्वीव षटपदे। they say जो बुद्धूपति होता है ना, that a जो foolish ज्ञानपति husband होता है ना, or a materialist वो husband अपनी पत्नी का साथ तब तक देता है will जब support his तक wife अपनी till the इच्छा, point अपनी वासना पूर्ण हो जाए। till he is अपनी इच्छा, able अपनी to कामना satisfy वासना पूर्ण हो जाए, his तब तक carnal उसके लिए स्वार्थ। desires. बाकी पत्नी क्या है, उनके मन में क्या फीलिंग है, क्या इच्छा, Otherwise, they उसको don't care देखता about नहीं। the emotions and feelings of the पुंभि wife. स्त्रीषु कृता यदवत सुमनः स्वीव षटपदे। जैसे पुरुष अपनी So, कामना इच्छा पूर्ण होने पर like a man अपनी स्त्री who को छोड़ देता है, leaves his wife after ठीक उसी fulfilling his प्रकार carnal desires. कृष्ण ने हमको छोड़ दिया Similarly, है, क्योंकि हम Krishna अपने has हैं। left नंद us. यशोदा उनके माँ बाप हैं, वो अपने हैं, उनके लिए आपको भेजा, हम हमें छोड़ दिया। पहले मित्र का, फिर पुरुष स्त्री का, फिर आगे कहते हैं निहस्वम त्यजित। Further, she adds, जैसे जैसे गणिका किसी किसी धनी व्यक्ति के साथ तब तक रहती है जब तक उनके पास धन है। so as निहस्वम उस पुरुष के पास धन खत्म हो जाता है, a woman गणिका stays त्यजंती, वो गणिका उसे त्याग देती है। with a दासवत person, नृपयांगना वेश्या, so Ganika वो means उस a पुरुष के साथ prostitute तब or तक a रहती है जब तक damsel, उसके पास धन dancer. होता है। She धन समाप्त stays with होने a पर वो wealthy उसे त्याग person देती till है। that ठीक person उसी has प्रकार opulence कृष्ण and भी wealth. हमको त्याग दिया। After that, she leaves गणिका that शब्द, ये person. सब संस्कृत शब्द है। ये गणिका शब्द क्यों जानते हैं? So, इसको what is the याद किया meaning करें, अभी behind आया इसलिए कह दूं। Ganika? गणिका माने गिनना, Means to वो count. गिनती है कि ये एक She पुरुष है, दो counts. पुरुष, तीन पुरुष, वो घड़ी गिनती है, गणिका। That is why she's called तो Ganika. गणिका पुरुष का साथ तब तक देती है जब तक उनके पास धन होता है। धन खत्म, संबंध खत्म। ठीक उसी प्रकार As soon as the wealth is over, the relationship is over. फिर आगे कहते हैं अकल्पम And नृपतिम further, प्रजा, they add, अकल्पम नृपतिम प्रजा। प्रजा राजा the का साथ तब तक देती है जब तक राजा या नेता citizens प्रजा को support मदद करे, the हेल्प करे। king or the minister until he helps आज them. प्रजा जिसको वोट देती है, यदि अच्छा काम करेगा तो अगली बार देंगे, तो किसी और को If a देगी। person performs well, प्रजा then भी only राजा को the तब तक government मदद or the करेगी people will vote him जब again. तक राजा प्रजा को मदद करेगा। So the राजा प्रजा people को also मदद करना बंद support a करेगा तो king वही प्रजा राजा when को he गिराएगी। helps. Otherwise, इसमें there will आपको be a देखा होगा कुछ revolt. लोग पार्टी बदलू होते हैं। We've इस seen साल with इनके our own पक्ष eyes. में खड़े, उस साल वो सामने वाले Sometimes में होते हैं, people तीसरे साल change उसके their पक्ष में होते हैं, चौथे। लेकिन ऐसे political पार्टी के बंटे हुए affiliations. होते हैं, जिस पक्ष में जाते हैं वो हारता ही है। They are sometimes so unfortunate that जहाँ जो पक्ष में wherever जाए they वो हारता go, है। they ऐसे हमने कई सारे get अनुभव किए। defeated. लेकिन अकल्पम नृपतिम प्रजा, प्रजा भी राजा को तब तक रखेगी जब तक वो उसका पालन करेगा। The citizens will support till the king supports असमर्थ them. होता है तो प्रजा उसे त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार श्याम सुंदर कृष्ण ने Similarly, हमको त्याग दिया, Krishna has alienated क्योंकि हम us उनके थोड़ी ना है, हम तो पराये हैं। ये सब because we पराई are का नाता है। strangers. जो पराये होते ना वो We have स्वार्थी no होते हैं। relationship with him, वो and his अपने relationship with स्वार्थ के us लिए, was based on ठीक है, पुरुष के selfishness. लिए स्त्री स्वार्थ, गणिका के लिए पैसे वाले पुरुष स्वार्थ, प्रजा के लिए
फिर आगे कहते हैं अधीत विद्या आचार्यम। Further, they add गोपी आगे कहती हैं Adit Vidya. कृष्ण ने वैसे ही हमें त्याग दिया है Krishna has जैसे left स्कूल, us कॉलेज और as गुरुकुल में in अपने the हाथ से Gurukul or विद्या school लेकर एक शिष्य as अपने a गुरु को त्याग देता है। student after getting all the education आज आज from आज हम his जॉब spiritual करते master हैं, leaves बिजनेस them. करते हैं, आज Today कॉम्पिटिशन we भी है, इसीलिए नहीं work ताकि हमको किसी or ने पढ़ाया लिखाया हो। business. We are able to do हमारे that पीछे because कोई we were गुरु होने नहीं able आते to हैं। और जब get आज हम education इस from so मुकाम पर many पहुंचे हैं तो इस teachers. वक्त कौन and गुरु याद है? and now that we have reached that थर्ड level, ग्रेड में कौन था whom गुरु, of us फोर्थ ग्रेड में have कौन था? ये तो बहुत दूर की remember our बात, और गुरु को teachers? भी लोग भूल जाते हैं। People even forget their जिसने spiritual भक्ति करना masters सिखाया, who had taught them पढ़ना बोलना सिखाया। the pure devotional service towards the Lord. They तो forget अधीत them. विद्या आचार्यम, विद्या सीख लेने के बाद After जैसे learning भगवान को हम the लोग भूल जाते हैं, वैसे कृष्ण हमको भूल knowledge, गए। ऋत्वी जो they दत्त leave दक्षिणम, or forget. इसके दो अर्थ Similarly, हैं। Krishna has forgotten जैसे us. ऋत्विज, ऋत्विज They माने have मान क्या forgotten होता है? us. So, ब्राह्मण Ritvik means यजमान की वाणी तब Brahmans. तक करते हैं जब He, तक दक्षिणा न मिल जाए। the जैसे दक्षिणा Brahman का कवर मिला तो praises the बोले host कौन? till लेकिन the हाँ, दक्षिणा time के पहले they ब्राह्मण 10 बार get फोन करेंगे, महाराज जी the आप ना, remuneration जजमान जी, from them. जजमान जी सब ठीक है ना, जजमान जी Otherwise, till the दक्षिणा सब है time ना। they don't get the money, लेकिन they जैसे ही keep on दक्षिणा calling मिल them. गई, Once they बात get खत्म। their money, जजमान कहाँ, ब्राह्मण भूले then उनका। there is no तो relationship. ऋत्वी जो दत्त दक्षिणम, तो ऋत्वी जो दत्त दक्षिणम, जैसे ब्राह्मण भी दक्षिणा तक। या फिर इसका दूसरा अर्थ भी आचार्यों ने कहा, So there is another meaning जैसे here यजमान mentioned by Acharyas. ब्राह्मणों को तब तक याद करते हैं जब Like तक उनकी विधि the, न हो जाए, हैं? the शादी host की विधि remember हवन, हैं? the Brahmana तब तक वो till ब्राह्मण को बहुत फोन they करते हैं कि पंडित जी perform समय से आ जाना, आपके लिए all क्या भोजन the ये वो। rituals in their लेकिन जैसे ceremony. ही यहाँ विधि कंप्लीट And हुई, once the बेचारा ritual ब्राह्मण is कोने में बैठा complete, रहता है, उसको कोई the नहीं पूछता Brahmin कि is not even क्या asked हुआ, ये anything. किया He's वो sitting किया, in a corner. ब्राह्मण को कोई नहीं पूछता। अपना काम हो जाने के बाद जैसे ब्राह्मण को लोग ठुकरा देते हैं, पंडित जी को छोड़ देते हैं, वैसे कृष्ण ने हमको छोड़ दिया Similarly, है। Krishna has bereft us. गोपियां ये सब कहाँ पढ़ने गई होगी? Where have प्रेम gopis होता है, went ज्ञान अपने to पास learn होता all है। these things? आगे कहती हैं When there is love, there is कदाचित knowledge. फलम वृक्ष, जैसे पक्षी So they अपना say काम that कर लेने के बाद वृक्ष as को छोड़ देते हैं, a bird पक्षी leaves the वृक्ष को tree छोड़ देते हैं। once और they देखो, पक्षियों के don't लिए need वृक्ष him. बहुत जरूरी है। For the birds, पक्षियों का the आश्रय ही वृक्ष trees माना गया है। are important. पक्षी They are वृक्ष की the छांव में abode of बैठते हैं, the पक्षी वृक्ष birds. के, They sit in वर्षा their में भी shade. वृक्ष ही उनको बचाता है। In the rain also, they are वृक्ष से protected by पक्षी the को trees. बचाव होता है, भोजन मिलता है। It gives them लेकिन food, जो वृक्ष shelter, पक्षी को but छांव देता है, the जो same वृक्ष tree which पक्षी gives को them भोजन देता है, shade, ठंडी गर्मी से बचाता है, food, and पक्षी उस shelter, वृक्ष में बैठकर protection, भोजन पानी सब कुछ करके टोटल अपना सारा काम कर लेता है और फिर उस वृक्ष को छोड़कर चला the जाता है। bird gets everything, but yet खगात after वित्त फलम the वृक्षम, goal is achieved, जब the पेट birds खाली हो leave जाता है the tree. When तब there is no पक्षी fruit in वृक्ष the को छोड़ tree, देते हैं, the birds जैसे leave the कृष्ण ने tree. हमको छोड़ दिया। Similarly, एक Krishna बात और has आपको कहूं, left गुरुदेव से us. सुना था, I heard वृक्ष this भी from चाहते हैं कि हम Guru पर पक्षी Dev. बैठे। Even the ये trees पक्षी है, want the सजीव है, birds, इनको बहुत खुशी मिलती है, वृक्षों को बहुत आनंद the मिलता है birds to जब stay उनके there. पक्षी They उन पर feel पक्षी very बैठकर कलरव happy when करते हैं। the birds sit लेकिन on them पक्षी अपना because काम, अपना स्वार्थ they also छोड़कर have life. वृक्ष को But छोड़कर the चले जाते हैं, birds, ठीक उसी once their प्रकार motive is श्याम complete, सुंदर they कृष्ण leave ने हमको छोड़ दिया, the हमको tree. त्याग दिया, क्योंकि हमको Similarly, चाहिए। Krishna has गोपियाँ कहती हैं, bereft us. आइए अब आपकी बात आने, आप लोगों की बात भी आएगी। भुक्त्वा च अतिथयो गृहम, जैसे So now अतिथि it's coming about किसी us. के घर पर जाते हैं अतिथि So बनकर, when we go तो as a उस जिसके घर पर guest to जाते हैं someone's उस घर home, पर तब तक घर की
So હવે એના છોકરા they ગરધણી હોય ને એના છોકરામાં કાંઈ લેવાનું ન હોય, નાકમાંથી ગંગા જમના નીકળતી હોય, કપડા પહેરા હોય ન પહેરા હોય, તો આપણે કે કિતના અચ્છા બેટા હે, કિતના અચ્છા લડકા when હે, the ये guest भगवान is भोजन there, करना है. they even praise लेकिन घंटे the डेढ़ घंटे जैसे their ही son भोजन हुआ, who whose nose is flowing, हम लोग भी yet they will अतिथि praise. बनकर It's जाते हैं ना, such a जैसे कि beautiful अगर अतिथि बनकर जाते हैं तो जब boy, बैठते हैं तो मन because क्या होता they है, क्या चढ़ाएं have ये वो सब कुछ. to लेकिन have जैसे their ही meal भोजन there. हो गया, But as soon as the नाम food बराबर है they कि have आधा घंटा भी had उस घर में बिता their दिया जाता है. meal, भोजन के बाद they बोलते हैं don't महाराज even ठीक है तो अब हम चलते sit हैं. there तो वही बात गोपियां even कहती for हैं, half an hour. भुक्त्वा च अतिथयो गृहम. So this is what they're जैसे saying. अतिथि भोजन करके As a guest गृहम leaves घर the के home सब कुछ after भूल जाता taking है, the home, after सब कुछ having the भूलकर meal, कृष्ण and हरि हरि forget बोलता है. about the host. भुक्त्वा च अतिथयो गृहम. फिर आगे कहते हैं दग्धम मृगा Then यथा they अरण्यम. add, जैसे अरण्य, जैसे वन में आग लगती है, as when there is जैसे a बताइए forest मृग fire, माने पशु, the चार mrig पैर वाले means पशु. animals with four पशुओं का legs. सहारा वन होता है. पशु So वन the में रहते हुए animals are खाते बने dependent पीते हुए on the कहीं उनके forest लिए सेफ होता है. for everything, food, लेकिन जब shelter, वन में protection, आग लगती etc. है, But when the तो जिस forest वन को catches पशुओं ने fire, सहारा दिया है, then उस the वन को ही छोड़कर पशु animals भाग जाते हैं. who were given shelter, तो दग्धम they मृगा leave that यथा अरण्यम. forest and run जैसे away. मृग, जैसे पशु आग लगने पर वन को त्याग देते हैं, वैसे ही As कृष्ण ने हमको त्याग दिया, क्योंकि हम पहले the animals leave the forest if एक in एक case of fire, प्रकरण में एक एक similarly प्रवचन Krishna छोड़ has दूं, left us. मुझे तो आगे पहुंचना है, राधा हुआ च में, लेकिन ये एक एक सब्जेक्ट है भक्तों. गोपियों की बहुत बड़ी बड़ी बात है, किस प्रकार से मृग को पोषण There is मिलता है, वैसे किस so प्रकार से much गोपियों ने कृष्ण को पोषण more किया to है. say, और but we आग have to लगने पर reach मृग छोड़ देते हैं, वैसे किस प्रकार कृष्ण ने त्याग दिया. and एक discuss एक more. शब्द में बड़ा मर्म छुपा Even हुआ है. one word has so much meaning. दग्धम मृगा यथा अरण्यम. तो किसी ने पूछा So कि someone मतलब वन में asked, आग लगने से पशु को भागना नहीं चाहिए. if नहीं the चाहिए. forest catches a fire, then जिस वन को shouldn't the त्याग दिया है, animals वर्षों से तुम leave? जिस वन में Then रहते हो वहां आग no, they लगी should है, not leave तो because प्रयास करना चाहिए उस आग को बुझाने का. you have taken so much shelter और from यदि नहीं there, बुझा सकते and तो you should जिएंगे try तो साथ में, to मरेंगे तो साथ में, pacify that यही fire. इसको कहते हैं. And if जीना even मरना if तेरे we संग है, fail, then क्योंकि also जिए वन में we'll live with बेचारे you वन and we'll जब die with you. आग That लग is गई तो फिर selfless छोड़कर love. चले गए. कृष्ण ने ये काम किया है, This हम is what छोड़कर Krishna चले has गए. done. He has left us. और जारा भुक्तवाम रताम स्त्रियम, और जार पुरुष, And पराया as पुरुष a अपना भोग भोग कर, man, जहां आज भी वैसे भौतिक धरातल पर प्रेम है if ही we नहीं, see in the material प्रेम world, there को is प्रेम समझ no भी लिया जाए, love. लेकिन Even जो if we try to पराया पुरुष होते हैं understand ना, love, a जार है, जार person माने पराया, who is पराया not पुरुष भोग ours, भोग कर he स्त्री को will छोड़ देता है, वैसे ही fulfill कृष्ण his ने हमको carnal desire and then he will leave the woman. इति Similarly, गोपम Krishna गोविंदम. has left us. कहते हैं इस प्रकार से गोपियां And this भगवान श्री way, कृष्ण को गत वाक्य the मानसा, gopis, कृष्ण में पूर्ण रूप से तल्लीन होकर, although they are वाणी मन engrossed और शरीर से completely in पूर्ण रूप Krishna से through कृष्ण में mind, तल्लीन हो body, चुके and थे. soul, और उद्धव तो बैठा है आसन पर, उद्धव को बीच में बिठा दिए, गोपियां घेर कर खड़ी हैं और इस प्रकार से कह रही हैं, हाथ लंबा कर करके. स्त्रियों का तो था ना, तेरे कृष्ण ने हमको इसी प्रकार से छोड़. they're accusing Krishna with their fingers pointing देखिए towards यहाँ पर him. शब्द है इति गोपियो ही गोविंदे गत वाक्य काय मानसा. गोपियों ने अपनी वाणी, काया So, और मन से the कृष्ण में gopis उतने with their समय आते उद्धव के speech, हृदय mind, तल नहीं body, होगा. उद्धव के सामने गोपियां बोलते बोलते अपने but लौकिक saying धर्म को thus भूल गई. गोपियों ने अपने to लौकिक धर्म को Uddhavji, त्याग दिया, they forgot their लौकिक मर्यादा
material principle. So it is true that a person who is engrossed in the Lord, he will fail in the material principles and etiquette. So this is the 10th stage of the gopis' love for Lord. That is the stage of Mahabhav. Upanishad says that who is Krishna? He is Rasik Shekhar, or who is the epitome of all the mellows. And such, because they have contemplated so much on Krishna, their mind has become the ocean of the mellows, and it has waves. And this discussion is the part of those waves of mellows. Although these words look very bad, but we should remember stealing is bad, but if Krishna steals the butter, then it is the highest proclivity of the Lord, because it is very important that who is doing the duty, or the pastime. If Krishna steals the butter, then there will be so many Bhagvat Kathas. So, in the same manner, the speech of gopis are not straight, but the center is Krishna. That is why it is great. As Krishna, the butter stealer, is a proclivity or pastime of the Lord, which has so much mellow. Even if you don't understand big topics here, but गोपियों ने अपनी सभी इंद्रिया the gopis have focused all their senses in Lord Shri Krishna. What is the meaning of gopi? This, that who are drinking Krishna by all their senses. Go means senses and P means to drink. If I keep the verse in front of you from the Niti, it is important. Please try to remember this. कुरंग मातंग प्रतंग भ्रिमना हता पंच भिरे अवापी एकह प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंच रेवच यह सेवते पंच भीरेव पंच। थोड़ा सा मिस्टेक है शब्द में, भ्रू मीना है वो। नीचे जो है ना गोपियों का लीला है, गोपियों ने क्या किया, अपनी प्रत्येक इंद्रिया, what has the gopis done? They have focused all their senses in the Lord. And what does Niti says? It says that these 5 types of animals, they have only one sense. And because it becomes uncontrolled, they lose their life. They get struck in so much obstacles. So the first is deer, kuranga. So the deer who listens, he likes to listen to the music, wants to listen to a specific song.
So में the आसक्त है, hunter who तो wants हिरण to पकड़ने वाले उसी catch गीत the को बजाते deer, हैं, और they जैसे ही हिरण play उससे that आकृष्ट होता है music, बाण मार and के when उसका वध it's कर देता है। attracted, they are killed केवल by एक the ही hunter इंद्रिय कान जिसकी just काम करती है, because of वो हिरण the संगीत use में आसक्त हुआ misuse मार of के बलि हो their जाता है। ear, and they are कुरंग, killed, they lose फिर their दूसरा है life. मतंग, मतंग माने Matang हाथी। means elephant. हाथी जो है ना उसकी स्पर्श इंद्रिया सेंसिटिव होती हैं। Elephant has हाथी में touch स्पर्शन इंद्रिया उनमें बहुत ज्यादा विकार होता है। very, very तो powerful. हाथी पकड़ने वाले जानते हैं, So इसलिए क्या the करते हैं hunter are कि एक बहुत बड़ा खड्डा aware, करते हैं, and they उसमें make थोड़ा a गर्म तेल डाल huge देते हैं, और उसकी उस खड्डे के उस पार हाथनी को, फीमेल हाथनी को dig. खड़ा They करते हैं। dig a तो huge हाथी उससे hole मोहित हो जाता है, and put some क्योंकि grass, उसकी and स्पर्श इंद्रिया ही ज्यादा उत्तेजित होती है। it get attracted और to the जैसे हाथी soft हाथनी की ओर grass बढ़ता है, by the touch, and उसको उसका संग आलिंगन oh, करने के लिए, तब when तक वो खड्डे में गिर he जाता है, wants to बेचारा बंधन में फंस जाता catch है। the female हिरण elephant, की एक कान it वाली इंद्रिया get अनकंट्रोल बंद है, trapped in हाथी the की स्पर्श इंद्रिया hole, कंट्रोल पकड़ा गया। फिर and तीसरा he है is पतंग, catched. पतंग माने कीट। Similarly, कलिंगा जो होता है ना, patanga वो अग्नि के स्पर्श में आते ही मर जाता है। is ये an अचानक insect उसके which मन में इतना attracted भूत भरा है, वो अग्नि की ओर ही जाता है। to आप उसको the कभी देखिए, fire. बलदेव So भाई this सत्संग करने firefly, वाले हैं अहमदाबाद में, भव्य आयोजन। तो हमारी चर्चा हो रही थी कथा का समय क्या होगा, मैंने कहा शाम को रख सकते हैं। तो so बेचारे वो चिंता कर रहे थे, प्रभु शाम को रखेंगे तो so वहां फोकस और लाइटें होंगी, Baldev उसमें bhai, कितने जीव जंतु मर जाएंगे। Ahmedabad तो is ये पतंग जो organizing है a great katha. वो So he was worried that चारों if we ओर do in the प्रकाश की ओर evening, then जाते हैं। so many तो insects will उनका die ये जो getting इंद्रिया है, attracted to वो the light. प्रकाश देखना, वो रूप देखना चाहते So हैं, these fireflies that और get अग्नि attracted रूपी रूप to से the मोहित होकर fire, अग्नि की ओर जाते हैं, and और they फन 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 it करके goes गिर जाते towards the हैं। fire and get killed. एक इंद्रिया। फिर आगे So कहते by हैं just गुरु, गुरु seeing माने भ्रमर। the fire, भ्रमर जो होता है गंध में they are आसक्त killed. होता है। And similarly, वो कमल में जो the सुगंध होती है, bee पराग गंध, is उसमें attracted आसक्त होता to है, the उससे fragrance of मोहित हो the जाता है, lotus, और इतना आसक्त होता है, इतना and is आसक्त so होता much है attached to that कि fragrance वो कमल में ही that आसक्ति से मर जाता है। it dies और eventually मीन because of that फिर कहते हैं attachment. मीन माने मछली। And मछली रस में lastly, आसक्त होती है, the उसे fish स्वाद चाहिए, टेस्ट चाहिए, is और मछली पकड़ने वाले वो कांटे में थोड़ा सा wants to have खाना taste. डाल देते हैं, They मछली छोड़कर, the और वो fisherman मछली put जब some उसको food, वो जीवहार and टेस्टफुल खाना the चाहता है, तब fish तक तो कांटे में फंस जाता to है, taste मर जाता that है। gets trapped तो कहा गया and dies. होता पंच भी एव अपि, इन पांचों की एक एक So इंद्रिया एकम all प्रमादी, these have इन पांचों की एक एक इंद्रिया one sense अनकंट्रोल्ड है, each, फिर भी which मारते is हैं। uncontrolled, and they हमारे get पास तो ये पांचों dead. इंद्रिया है, And we have हिरण के all पास these तो five केवल senses. श्रवण इंद्रिया, फिर भी मारा गया। हाथी के पास केवल स्पर्श So इंद्रिया, फिर भी imagine गया। what will be our situation. लेकिन हमारे पास श्रवण है, स्पर्श इंद्रिया, हम तो, हमारी तो सारी इंद्रिया अनकंट्रोल्ड है। So all our न senses are सेवते uncontrolled. पंच भीरेव पंच, तो संसार का आदमी अपनी So इन the अनकंट्रोल्ड person of इंद्रियों this से material world, किस प्रकार से अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा? how can he live यदि इससे बचना है तो perfectly? नीचे If we गोपियों ने want जो किया, to इति protect गोपेशु ourselves, गोविंदे then we should do what the यत gopis have done. वाक काया मानस, They have अपनी वाणी, put अपनी काया, all अपना their मन, अपना senses चित्त, अपनी इंद्रिया at the सब कुछ lotus feet भगवान of में the लगाई Lord. है। They are एक इंद्रिय focused को भी छोड़ा, जैसे एक इंद्रिय को on अनकंट्रोल छोड़ा ये लोग मरे, the lotus feet of the वैसे Lord. एक इंद्रिय को भी यदि Not प्रभु even की one सेवा sense में, प्रभु should भजन में be नहीं लगाया, तो हम devoid मरेंगे। of serving the Lord or इस प्रकार से concentrating on His गोपियों lotus ने feet. बहुत सुंदर निवेदन किया। आगे कहते हैं This way, the gopis गायंती प्रिय कर्माणि, have mentioned beautifully. गोपियां कहती है, So, further, they तब say, तक गोपियां क्या करने लगी? what did उद्धव they जी को इस started to प्रकार से do? कहकर गोपियां After saying गायंती, this, gopis गायंती started singing. प्रिय कर्माणि, रुदंती च गत ह्रिय। अब वो उद्धव तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, Uddhav ji was उद्धव तो बैठा था, वो numb, कुछ बोल ही, क्योंकि वो he तो was सुन्न पड़ गया। speechless. और यहाँ गोपियां पूछ रही
And the समझ में कि gopis are बोल नहीं asking. रहा है, इसका अर्थ ये हुआ They कि वो understood कुछ that नहीं he's बोला, not वो speaking सही बात anything. है। So that means that तो अब he's क्या not करती replying. गोपियां That means वासुकी that चिन्ता जी गायन they're गाती agreeing. रही, क्या प्रिय Adavji is agreeing on what they have अपने प्रिय said. भगवान श्री कृष्ण के So कर्म this को what they do, they started रुदन्ति रोते singing हुए। while weeping. रुदन्तिश्च गत रिय, Rudanti means कैसे गाने weeping. लगी? हिय माने लज्जा, लज्जा त्याग कर गाने Hiya लगी। हम लोग means गाते हैं लेकिन लज्जा नहीं त्यागते अभी भी। singing ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन में क्या shamelessly. लज्जा, नाचो कूदो यार। गोपियों गत हिय, हिय माने लज्जा, लज्जा Hiya त्याग कर। means shame. यस्य संस्मृत्य, संस्मृत्य यानी कैशोर्य बालयो। कृष्ण ने अब तक जो जो लीला की थी, So सारी लीला को गोपियों they का start अद्भुत भाव, singing the proclivities गोपियां of वहां क्या pastimes of Lord कहती Shri हैं, Krishna. आप What do they सुनिए, say while crying गोपियों का अद्भुत भाव है। in front of your screen? गोपियां कहती हैं, The gopis of the Braja say, बांधवो, गोपियां कहती हैं बांधवो यदि जहाति हियताम, यदि हमारे बंधु बांधव हमारा त्याग if कर दे, our relatives यदि यदि बांधवो हमारे बंधु disown बांधव us जहाति हियताम हमारा त्याग कर दे, साधवो यदि हसंति हस्यताम, और बड़े बड़े साधु हम पर and हंसते रहे कि ये even क्या if the है, greatest ये तो कोई sages laugh at us that बंधु we have बांधव become हमारा त्याग crazy, करे, साधु संत हम पर हंसते रहे, माधवो यदि हिनंति हन्यताम, और माधव कृष्ण जिससे हम प्यार and Krishna, whom we love निहंति हन्यताम, unconditionally, वे चाहे हमको भले ही हनन कर ले, हमको मार दे, even if he माधव स्वयं kills हंसते us, दया, लेकिन अब माधव से प्यार करने में, उनका कीर्तन करने में मुझे कोई नहीं रोक but सकता। nobody can stop us from बंधु हमें त्याग दे, doing साधव Sankirtana हम पर of his हंसे, name. या माधव हमें मार दे, लेकिन हम हमारे माधव को स्वीकार कर चुकी हैं, We have accepted स्वीकार कर him. चुकी हैं, स्वीकार कर चुकी हैं। गोपियों ने यहाँ पर अपना कंप्लीट किया। अभी राधा रानी की एंट्री नहीं हुई है, So Radharani's entry is still there. साइड की गोपियों का चल रहा है। So these are the. राधा की एंट्री अब होने वाली है। So this is where अब Radharani यहाँ पर उद्धव enters. बीच में ये सब गोपियां, छोड़ो भाई, ये गूंगा कुछ बोलेगा नहीं, इसे कुछ होगा नहीं, छोड़ो। गोपियां वहां से थक गई, कृष्ण के गीत Gopis कीर्तन became सब कुछ tired. They तब गोपियां sang, बोली राधा कहाँ पर sang the है, songs. राधा And कहाँ then पर they है। realized that where is Srimati Radharani? सारी गोपियां वहां से चली राधा को खोजने के लिए, And they started searching her. और राधा रानी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। And she was ललिता विशाखा on को कहती थी, her ललिता deathbed. अब जीने से कोई लाभ नहीं She है। was saying that there is no use to जीव गोस्वामी live ने अपनी more. टीका में, मुझे तत्काल Jiv नहीं याद आ रहा है, Goswami has written राधा रानी in his ललिता interpretation. विशाखा को कहती है, विशाखा मैं अब मेरे शरीर को त्याग देना चाहती हूँ। Said that I want to और leave सुन my मेरी बात, body सुन now. विशाखा, मैं मेरे शरीर को कैसे त्यागना So, चाहती हूँ, and how I want to ये get rid मेरा of this मेरा body. शरीर छूट जाए, If और I मेरा leave शरीर my छूटकर body पंच महाभूत में मिल जाए, and it पांच महाभूत है ना, mixes पृथ्वी with जल the five वायु elements आकाश, of the earth, तो हे ललिता that is air, विशाखा, earth, ये water, मेरा शरीर fire, छूटे और मेरे शरीर से जो आकाश, जो वायु बनेगा, उस वायु से and the कृष्ण को air हवा that is मिलेगी, मेरे performed कृष्ण by सुखी होंगे, my मेरा जीवन सार्थक हो last जाएगा। breath. And if मेरे it शरीर से जो माटी बनेगी, faints on उस माटी से him, कृष्ण का बगीचा बन जाए, then I will be मैं blessed. धन्य हो जाऊंगी। मैं वैसे तो जीते जी कुछ काम में नहीं आ पाई, लेकिन ललिता Although विशाखा I मैं was not इसलिए able to do चाहती हूँ anything for कि Radha, मरने के बाद for Lord शरीर Shri के Krishna, पांच but after my महाभूत death, काम में आएंगे। at least my five elements after death पृथ्वी जल will अग्नि be वायु used in आकाश, Krishna's वायु से service. मेरे कृष्ण को हवा मिलेगी, पृथ्वी से उनका बगीचा सजेगा, With air, जल से उनकी वर्षा होगी। he इस will प्रकार से get राधा रानी ललिता विशाखा को कहती cool है, air. And
and by the he will get fresh flowers. और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं Shukdev Goswami mentions काचिन "Hmm, मधुकरम दृष्टवा આવ્યો મધુકર ભમરો આવ્યો છે હવે ભમરા આ રહા હૈ કાચિત મધુકરમ દૃષ્ટવા ध्यायन्ति कृष्ण संगमम काचिन मधुकरम दृष्टवा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितं दूत प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत् कल्पयित्वेदमब्रवीत् काचिन मधुकरम दृष्टवा फिर क्या हुआ then what happened? श्रीमती राधा रानी ने कहा कि Srimati Radharani said that अकेले छोड़ दो just leave me alone. श्रीमती राधा रानी बैठी हैं And she is ललिता sitting. विशाखा के कुछ दूर बैठी हैं Lalita and Vishakha are sitting गोपियों का झुंड little far, and all these gopis are coming, उद्धव बैठा था and Uddhavji is still sitting. अकेले बैठकर क्या करूंगा He thought that what will I do sitting here alone? से जाता हूँ ये लोग So he starts walking behind the gopis. What they do? उद्धव जी गोपियों के उद्धव Uddhavji is the ज्ञानियों के पीछे चलते knowledge. हैं लेकिन So usually the world follows the wise and knowledgeable people, but पीछे चल रहा है today ज्ञान the प्रेम knowledge is following the gopis, that is love. भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो So no matter how much knowledge you have, but you have to follow the love. और फिर काचिन मधुकरम दृष्टवा फिर किसी एक गोपी ने And then one of the gopi or eternal associate, यहाँ काचिन so यहाँ राधा शब्द होना चाहिए था they don't राधा say the name of Radha, दृष्टवा लेकिन but here this word Kanchan, because Shukdev Maharaj, स्वामी की गुरु है राधा bona fide spiritual master, is Radharani, and due to etiquette, he has not named, भारतवर्ष की taken the आर्यवर्ष की नारी name or addressed के कारण the name पति का नाम समाज में नहीं लेती as in the Vedic culture. The woman does not take the name of her husband. नाम आने से समाधि लग जाती और Or समाधि में परीक्षित क्या otherwise, he would have contemplated देव जी ने नाम नहीं on Radharani, देव जी ने क्या कहा and then Parikshit Maharaj would have been not able to get liberation. That is why he didn't address the gopi as Radharani. एक एक शब्द को समझेंगे क्योंकि अभी राधा शब्द आया तो अब तो हमको थोड़ा सा यहाँ रुकना So we will काचित राधा रानी understand each and every one. So Kanchin word is used for Radharani. So let's understand this word through the interpretation of the Acharyas. So the Ka alphabet here me Kwachit means koi ek, that is Radharani. आचार्यों ने एक टीका में लिखा के प्रेमात्म के काचित शब्द में जो क है So the Ka alphabet in this word is denotes love. प्रेमात्मक सुख संबंधी फिर आ शब्द लगा ना काचित क आ चित तीन शब्द हुआ ना क आ So Ka a chit कहते हैं Kwachit. तो क आ चित उसका मीनिंग करेंगे तो राधा रानी का गुण समझ में आएगा So then if we understand this meaning, we will understand the quality of Srimati Radharani. So K denotes love and loving relationship, and
Samyak means तो प्रेमात्मक सुख संबंधी सम्यक ज्ञान equanimity, जिसमें and भरपूर भरा है, Chit सा means वो knowledge. काचित गोपी श्रीमती राधा रानी ही, अर्थात So the प्रेमात्मक gopi सुख who संबंधी सम्यक is चित माने ज्ञान, e- प्रेमात्मक सुख संबंधी भरपूर ज्ञान जिसमें भरा है, filled with सा knowledge काचित गोपी and denotes श्रीमती राधा love रानी। itself तो ये काचित is शब्द को Krishna, श्रीमती राधा Srimati Radharani राधा herself. जी की महिमा और बहुत सुंदर Then बताते हैं। one काचित more शब्द को लेकर कम, with this काचित शब्द word, में काचित कम, the come प्रेमात्मकम here सुखम, denotes प्रेमात्मक सुख, कम प्रेमात्मक सुख। the देखिए कम bliss माने बहुत of सारे हैं, love. कम माने ब्रह्मा भी होता है, कम और Prematmakam सुख ये माने means बहुत सारे अर्थ होते love हैं, and Sukh यहाँ means प्रेमात्मक सुख। happiness. तो प्रेमात्मकम सुखम भक्त जनेषु क्षणे क्षणे आचिनोति। आचिनोति माने हम जैसे पेड़ में पौधे में पानी डालते हैं ना, As वैसे we श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, कम put प्रेमात्मकम सुखम, water प्रेमात्मक सुख in the भक्त जनेषु trees, भक्त जनों में similarly, क्षणे क्षणे आचनोति, Srimati अभिर्भवति भक्तिरति Radharani क्वाचित, puts जो अपने भक्तों में क्षण क्षण में प्रेम भरती रहती है, love इसीलिए in उनको her क्वाचित devotees कहते हैं। every moment. That is why she is वो called तो Kwachit. राधा रानी प्रेम की देवता है। She is the भगवत epitome of चरितमृत love. में यदि अनुभूति चाहिए तो If we राधा want रानी की कृपा के the बिना feelings नहीं toward the मिल Lord, सकते। then we cannot have it without इसीलिए the mercy of इसीलिए हमारे शास्त्रों में Srimati Radharani. That is why जबरदस्त महिमा it is कहती है, mentioned in the गौर scriptures. तेज परित्यज्य, ये गौरांग स्वरूपा गौर अंगी श्रीमती राधा रानी को So तेज this तेज त्याग कर, white श्याम Srimati तेजस्वी Radharani, यदि कोई श्याम if we तेजस्वी leave श्याम her सुंदर की पूजा and करता है, we want गौर तेज को त्याग कर to श्याम तेज worship की Lord पूजा करे, Krishna, जपेत वा ध्यायत, या फिर वो कितना भी जाप करे कितना भी ध्यान no करे, matter how much he भवेत meditate पातकी शिवे, वो or पापी ही contemplate, माना जाएगा, क्योंकि still उसने he will राधा be को छोड़ करके considered श्याम को as भजा है। a sinner because he राधा left को छोड़ Srimati करके श्याम Radharani को भजना and वो पाप ही माना जाएगा, tried to क्योंकि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा worship के Lord Shri Krishna. हमें Because without the कृष्ण mercy से of समझ Srimati नहीं आता है, Radharani, कृष्ण की we भक्ति cannot में ही understand Lord Shri न Krishna, कृष्ण nor का can we प्रेम achieve प्राप्त होता है, इसीलिए Krishna's तो कहते हैं pure devotional service toward the Lord or his love. सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी, क्योंकि सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा, हम निशानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली,
तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली, तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सो इस प्रकार राधा को छोड़कर श्याम को So भजना। in this way, if we leave Srimati Radharani and try to achieve Krishna Prema is considered as sin. So we understood Kvachit means Srimati Radharani because the glory of this word signifies the glory of Srimati Radharani. और तब तक यहाँ पर क्या हुआ, काचित मधुकरम दृष्टवा, राधा रानी ने And एक in the मधुकर, meanwhile, एक भंवरे को she देखा। saw a humming bee. काचित श्रीमती राधा रानी ने मधुकरम दृष्टवा, एक भंवरे को देखा और ध्यायंती कृष्ण संगमम। पहले तो भंवरे को समझ लीजिए, ये भंवरे So के first understand the humming. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। There is a आचार्यों ने confusion अनेकों about लिखा her. है, There आपको are so जो many मन अच्छा interpretations. लगे उस मन Whatever से you आप like, सोचिए। you listen or contemplate हमारे according वेदों to में भी that. बड़ी संकीर्णता नहीं है, बहुत ओपन रखा हुआ है। Our जो Vedas are अपने quite भाव open अपने for मूड के अनुसार interpretation आप उसे depending व्यक्त on कर our सकते हैं। mood and मोटा मोटी understanding. चार मत हैं We इस can भ्रमर के विषय में। ये understand. पहली लाइन में So जो there लिखा are है ना, four things काचित मधुकरम about दृष्टवा, this राधा humming रानी bird. ने एक भंवरे को देखा। So first of all, Srimati Radharani saw the humming bee. कि जैसे हमारे आजू बाजू So में the कई first भंवरे point. होते हैं ना, साधारण So भंवरा, we see an तो ordinary एक humming आचार्य ने bee. कहा कि ये So साधारण one Acharya भंवरा says, ही था। this was an एक ordinary नॉर्मल humming भंवरा था bee. जो ऐसे बन 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 करके घूमते राधा के सामने आया। परंतु श्लोक मूल But if you see in the verse, संगमम, क्योंकि राधा रानी का ध्यान पूर्ण because रूप से Srimati कृष्ण में लगा था, Radharani is totally इसलिए focused on Lord भंवरे Shri को देखकर Krishna. राधा को कृष्ण She, में after लगा था। seeing hummingbird, भंवरे humming bee, था तो she नॉर्मल भंवरा, she लेकिन नॉर्मल भंवरे gets को reminded of Lord के Shri आधार पर Krishna, कृष्ण और भंवरे को फिर मिलान करके and राधा ने then गीत she गाना शुरू कर दिया। started singing the song. ये साधारण बात। अब So this is the दूसरा ordinary दूसरा thing. पॉइंट, So the second point is राधा रानी जानती है ये साधारण भंवरा है, Srimati Radharani knows that this और is an राधा रानी ordinary जानती है कि उद्धव आया है, humming bee and Uddhava लेकिन is here, सीधा तो उद्धव को कह नहीं सकती, but she cannot तो say राधा ने straight क्या away किया, to भंवरे her. के बहाने उद्धव को सुना दिया। So जैसे she, हमारे लोक में एक रिवाज है so as कि in this जब material world, बेटी की शादी when होती है when the और जब daughter अपने gets married, मायके आती है when she और मायके में comes to बिल्कुल her बेटी की parents' बहू home, होती है, and then there तो is a daughter-in-law. बहू रानी को तो कुछ So कह नहीं सकते, so we cannot say तो anything to the बेटी को daughter-in-law. शिक्षा देते हुए So बहू को they शिक्षा दी जाती है। try to બહુ બધું તમે teach લોકો કરતા હશો, ન કરતા હોય તો કાલથી કરજો, તો સારું રહેશે તમારે। the daughter-in-law through the medium of बेटी को शिक्षा giving के education बहाने to their बहू रानी को शिक्षा daughter. दी जाती है, हमारे So ऐसी विधि है। that is the तो इस process प्रकार राधा in रानी this को material. दूर जो भंवरा था Similarly, उस भंवरे के Srimati बहाने Radharani उद्धव को शिक्षा दे रही, क्योंकि is उद्धव सुन रहा है, giving उद्धव जी देख रहे हैं। education or imparting ये दूसरा knowledge to पॉइंट। Uddhava through the medium तीसरा of this पॉइंट, humming bee. अब ध्यान से, एक आचार्य ने तो ये भी So the कहा third कि भगवान is श्री कृष्ण ही that भंवरा बनकर आए हैं। Lord Shri Krishna himself came कृष्ण देखना as a चाहते थे humming bee. कि He मेरे wanted to चरण see में राधा रानी का that चित्र जल्प कैसा है। चित्र जल्प माने वो क्या uh, बोलती है, when she is separated उसका from me, बोलना then क्या होता है। कभी what does कभार घर she पर मन speak? रहे, कभी दुखी हो जाती है तो सेवा तो करती है, लेकिन बोलते बोलते सेवा करती है। ये तो ऐसे ही Whenever ऐसे ही the बोलते हैं कि लोग women मेरे ऊपर get अत्याचार करते हैं, मुझे हर टाइम काम ही कराते रहते हैं और कुछ है नहीं, तो पतियों को सुनने में वो आनंद आता है कि भाई ये क्या चल रहा है। वो बेचारी सेवा करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन get एक माता
upset. They're working, but still they just keep on telling that my husband doesn't this, does do this and that. So that is the quality of women. So that word is called Chitradalp. And that is why to see that humming bee is Krishna himself. He came as a humming bee to see. So you can understand or contemplate on any of these or all of these. So the fourth is that this is an ordinary humming bee, but this is the humming bee of Mathura who came to Krishna, who was trained by Lord Shri Krishna and was sent to Braja. Specially, Krishna has sent this humming bee to Braja. What was the reason? The Acharyas say, by seeing this humming bee, to manifest the deep mellow of Srimati Radharani, and so that that mellow can be experienced by Uddhavji. And once Uddhavji experiences this, then the knowledgeable Uddhav becomes lover Uddhav, because the scriptures say that without love, the knowledge can never be decorated. Example, no matter how much big the boat is, but if there is no navigator, then there is no use of that boat. So no matter how much knowledge you have, if there is no love, then that knowledge is dry and futile. So Uddhavji was knowledgeable, but Krishna wanted him to be a lover. So such knowledge should be born where there is no mellow or love towards the lotus feet of the Lord is useless or futile. Lastly, it is said, where the fundamental is not love towards Ram, then the yoga is futile, knowledge becomes ignorance, where root is not Lord Sri Ram. So we are just discussing till now the first line of the verse. So, let's discuss how this humming bee looked like. So this humming bee was the color of Krishna, blackish, and he had yellow and as he had red lips, as Krishna plays his flute, this humming bee was humming like the flute. So all the features were matching Krishna. That is why Radharani was reminded of Sri Krishna.
and प्रिय प्रस्थापितम दूत कृष्ण का दूत समझकर thinking that कल्पयितुम he is the इस messenger of प्रकार से Lord, बोलने लगी। she started तो speaking श्रीमद् like विराट this. रानी किस प्रकार से क्या बोलने लगी, And कल शाम को what she 8 बजे। say, said धन्यवाद। will हरे be heard कृष्णा। tomorrow. आप Thank you सब so लोगों much, ने Hare Krishna. You बड़े all भाव से, have बड़े heard प्रेम with से so much mellow and कथा का love. आस्वादन किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। Thank you so much. विशेष धन्यवाद हमारे Especially, I want to सद्गुरुदेव thank the host family, ચતુરદાદા અને Chatur સરસ્વતી Dada માતાનો આખો and પરિવાર, શ્યામ સુંદર પ્રભુ, Shyam Sundar સવિતાબેન, Prabhu, Savitaben, ભૂમિકા, Bhumika, અમિત કુમાર, Mata, Amit Kumar, પારુલ માતા, Parul Mata, સુનિલ પ્રભુ, Sunil Prabhu, મનીષાબેન, સંજય Manisha કુમાર Ben, और सभी बाल गोपाल को and फिर एक बार all the धन्यवाद। kids. Thank you so आपके much. सहयोग से Because ये of सुंदर your आयोजन effort, संभव हुआ this और हम beautiful सब event इस was दिव्य organized, कथा का आस्वादन and we are कर रहे able to हैं। listen to this जय divine जयकार के साथ pastime of the Lord. Let's 25 conclude the सॉरी session day, तृतीय the, તૃતીય દિવસ की कथा थी। the third day तो of the पंचम में Katha. पारुल माता ने अर्धो तो अटैक આવી ગયો કે ઓ આ પાંચમો ક્યાં થયો। तीसरे दिन का हम पूर्णाहुति करें जय जयकार के साथ। So let's conclude with Jai Jaikar.